हॅलो सर. हॅलो सर. नमस्ते. साखरे सर चालू करायचं. So if your student is joining, we'll wait 5 minutes. If it is late, no problem. हा, विद्यार्थी जॉईन होत आहेत सर. हा, मग थोडं 5 मिनिट थांबूया ना. हो चालेल. ओके सर. कोणते रेसेल पडे
Hello, sir. Undri, sir. Hello. Undre, sir. Parvat, sir. Hello. Yes, I am ready. चालू करायचं का सर? हो हो चालूच करायचं. पार्टिसिपंट जॉईन होतील तोपर्यंत आपण चालू करू. येस येस. साखरे सर. Yes, yes, sir. हो. करा, चालू करा. Good afternoon. And warm welcome to all. Department Chemistry, Balbhim Art and Science Commerce College, organized Net Set lecture series for aspirants of Net Set GATE examinations. Respected Professor Dr. Harishchandra Prabhak sir, Department of Chemistry, Queen's College, Mumbai. Respected Principal of our college, Professor Dr. Santosh Undre sir. Respected teachers and dear students. I am Dr. M. A. Sakre, Professor in Chemistry, Balbhim College, Bid. It is a privilege to warmly welcome our distinguished resource person, Professor Dr. Harishchandra Prabhat sir, along with all the participants to the fifth day session of this NetSet lecture series. I request Dr. A.B. Danne sir to introduce our distinguished resource person, Professor Dr. Harishchandra Prabhat sir. Dr. Danne sir. Yes, sir. It's my pleasure to introduce such eminent personality, our today's resource person, Professor Dr. Harichandra Parbat sir. Dr. Parbat sir is a professor of physical chemistry and head of the Department of Chemistry at Wilson College, Autonomous, Mumbai. Dr. Parbat sir is having 20 years of teaching experience. He is contributing significantly to the field of physical chemistry and higher education. He has completed PhD from Department of Chemistry, Wilson College, Mumbai, University of Mumbai, and now he is guiding 7 PhD students. Dr. Parvat sir is interested in the research field of chemical kinetics, catalysis, nanocomposites, nanocatalysis, chemical and electrochemical synthesis of graphene. He is an expertise in handling of cyclic voltammetry, FTIR, CG, GCMS, UV spectrophotometer, XRD, DSC, TGA, EDAX, SEMTEM, and ICP-AS. He is recognized as a postgraduate teacher of Mumbai University. He is the chairman of Board of Studies in Chemistry, Wilson College, Autonomous, Mumbai. He is a BUS member in Chemistry, Vivekanand College, Chembur, Mumbai. BUS member in Chemistry, HSNC University, Mumbai. BUS member in Chemistry, Sir P.T. Raj Sarvajanik College of Science, Surat, Gujarat. BUS in Chemistry, Sophia College, Autonomous, Mumbai. BUS member in Chemistry, MSG College, Malegaon, University of Pune. BUS member in Chemistry, Punyashlok Ailadevi Holkar, Solapur University, Solapur. Dr. Parbat sir is an editorial board member of GP, Globalized Research Journal of Chemistry. He has delivered the 10 invited talk as a resource person in state and national level workshop on preparation of CSIR NET SET GATE examinations and
23 invited talks as a resource person in conference, seminar, workshops. He is a life member of the Indian Science Congress Association, life member of Association of Chemistry Teachers, India, treasurer of Association of Chemistry Teachers, India. He has published more than 36 international and national level research papers, 6 reference books, and 9 textbooks. He holds 4 patents. Dr. Parvat sir received National Dynamic Teacher Award, Avishkar Achievers Award in 2022, Best Ideal Teacher Award in 2023, ASEAN Admirable Achiever Award in 2023. With this introduction, I welcome you, sir. Thank you, one and all. Thank you. Sakre, sir. I request our respected resource person, Professor Dr. Harishchandra Prabhat sir, to deliver valuable insights on quantum chemistry. Good afternoon to everyone. Firstly, I will thanks to the management of Balbhim College, BEAT, Principal Professor Undre sir, HOD Sakre sir, and whole organizing committee. This is a very nice initiative because students should get some idea to how to promote in a higher education, and that platform and that opportunity Balbhim College is giving to the students. I think that is the best practices in this college. And I think this is the fifth day session. Earlier, respected all the resource person is given the some idea. First, Professor Prashant Anbule sir is a senior professor. He has given the whatever the set exam pattern. Then our idol, the Professor Rashinkar sir, then Professor Singte sir, and Karade sir from Nagpur University. They are given all these details, so we have to carry on that, and I think we have to do something. Before starting the session, I think today I'm delivering the physical chemistry session. Okay, is not quantum chemistry only, but quantum chemistry and applications. Because when you prepare for the CSR NetSet exam, you don't understand only theory, but you should have the skill to how to implement whatever the knowledge or theory behind that experiment, how to implement, and because of from that knowledge, how to solve the problem. Okay, so everyone, you have to keep in mind when you want to success in the higher education. Just is not for the outcome for the teaching field. It's not that way you have to give the CSR NetSet exam. Okay, because now in this competition, it is very difficult to get the teaching posts. But it's not that way you have to come only teaching. Okay, in the research field, you have a lot of scope, lots of opportunities there. Fellowships is there, GRF is there. So please, when you preparing, you prepare in a both way. Okay, you should be flexible at the any state or any condition. It's not that way. I like the teaching. I want to become the teacher. I want to become the professor only. It's not that way. You should not in this rigid things. Okay, you have to make yourself molded, flexible when you require. Okay, so I think everyone you have to keep in mind first. You should have the tendency when you start the preparation of competitive exams, means like the CSR, NetSet, GATE, or any IITs, any ISS when you are preparing for the interview also. Okay, first you should have that listening capacity. Okay, when your expert is there, anyone is there, you are attending the session, you have to listen it. Okay, then after the listening, what you are listen, you have to think it. Okay, just you listen and you stop and then you carry on. Oh no, because what is your objective is there.
And if you not get the outcomes from that objective, your maqsad or your target will not complete. Okay, outcome is very important. Outcome in the salary, outcome in the awards, outcome in the publications. But you have to focus on your objective and you try to achieve the outcomes. Okay, that's why first you have to listening capacity, you should improve it. Up to the listening, you have to start the thinking. Okay, what you are the thing, you have to, what you are listen, you have to think it. And if you think it, suppose what the topic is there, what you are listen, you started the thinking. Then after the thinking, you have to discuss with your expertise, your mentor, your seniors. Those are expert in that area. If his research is there, academic is there, or any experiment is there, please discuss with your mentors. Then mentor will say, okay, you are in the proper track. Because if you're wrong the track, you are doing the hard work, 5 years, 6 years, 12 months, 8 months, 10 hours per day, it is no value. Okay, so please, what use of the way is there, path is there, you have to check this path is correct or wrong. Okay, so please, means I'm saying you take the expertise from the you take the suggestion from the expert, means listening, thinking, and discussion with the expertise. Now after the discussion, your expertise or your mentor is saying you are the right track, you are perfect, then you start the implementation. When you implement, then you start the outcomes. Okay, nowadays everyone required the what you are the job, knowledge, everything within the short period. It is difficult to get it. So you want the outcomes, you have to start the implementation. Now suppose you have the knowledge in the field of the physical chemistry, yeah, organic chemistry. Please try to implement that knowledge, and through that knowledge you have to try to solve the problem. If you solve the problem, I think that you will be happy and you will get the marks, or you will be success in the CSR net set exam, or you get the job in the research, or in the you can get the admission in the research, yeah, in the teaching field. Okay, so without implementing in your knowledge, I think it is difficult. Okay, so what your specialization is there, organic, physical, inorganic. I think before starting the session, I'll tell you, I don't like the physical chemistry. My favorite, or I like the only organic chemistry. But I think you listen the first session, Professor Prashant Anbule sir. Okay, he's the senior professor of professor. He was given the one session in my college, because Professor Anbule sir, Rashinkar sir, and your principal Undre sir, we are did the BSc from the same college, Shivaji College, Barsi. We are the alumni of the same college. So when Anbule sir is given the first session after qualifying the SET exam, they told most of the people are qualifying the SET in organic chemistry or NET in organic chemistry. That time I was there in the TYPSC. So I asked the question to sir, why not in the physical chemistry? Can we try in the physical chemistry? So that time sir told, if is 50 student is passed, so out of the 51, maximum 1 or 2 student is from the physical chemistry. You have to take the risk, you can take it. So just without with that discussion, I was trying to take the only admission in physical chemistry when I like the only organic chemistry. Because that's why I'm telling you should be flexible. You should not be rigid. Okay, you check what is the requirement is there outside. According to you try to change. Okay, specialization is not the everything or final thing. Okay, so please, when you want to success, so these 4 steps you have to follow and try to prepare for the net set exam. And one thing you have to keep in mind, don't fix only what is going outside. After net set qualification, there is no job, nothing very difficult. Okay, just don't. Teaching is the one of the part. Okay, you can enter in any top level research institute. You can go to the abroad for the postdoc, PhD research. Lot of funding is there. Only you have to take the proper guidance from the proper expertise and take the positive things. Okay, for this type of the exams, your positivity is very important. I think most of the time people say, I don't like the quantum chemistry or physical chemistry and I don't want to study. I like this subject, I want to study. Okay, so I'll tell you what you like. Okay, what you like, please don't try. But what you don't like, please try. Please like, you like the sweet,
Okay, you have a lot of sweet, but what is the outcome? Okay, either diabetes or some of the disease. But you don't like the Karela juice. But if you try the 1 ml Karela juice per day, what is the outcome? Okay, so that outcome is very, very great. Okay, so that's why I'm telling you what you sorry, what doing, I know, but what you don't like, risk. I think, sir, it is audible, because otherwise from my side is going on. Then, sir, just once confirm. Yes, sir, you are audible. Okay, just okay, participant. Just this is for motivation. Okay, one more example I'll tell you. First, from this exam or from this preparation, you require you want the knowledge, or you want the only SAT or CSI NET certificate. What do you require? Knowledge or certificate? Okay, most of the people will say, I want to eligible, I want to pass, certificate is required. Okay, so just example. Or some of the people say, I want the knowledge because I prepared these exams, the knowledge will increase. So depends on the priority. Suppose you have one ATM card, okay, and if you try to operate the ATM machine, okay, without ATM card you cannot try to operate the machine, means ATM card is required. Similarly, you have to enter in your college only, Balbhim college, be it as a teaching post. Okay, first you require the qualification, is degree, MSc, SET, NET, PhD, postdoc, what you are, that you know. Okay, now when you operate the ATM machine, ATM card is required. When you enter any institute, degree is required, minimum eligibility is required. Now both are here. You are using the ATM card and try to operate ATM machine, but in your account balance is 0. No balance is there. So any use of that ATM card, you have 5, 10 ATM card, no use of the ATM card, balance is required. Similarly, because of the MSc, SET, NET, PhD, you enter in your college for the job, but after that, that is the entry, just getting the job. After that, you require the knowledge. In front of the student, you are not saying, I am the NET, SET, PhD, postdoc student, postdoc. Don't ask any questions. Okay, that time you require the knowledge. So please take care. Don't say, I want the knowledge or only degree. We require both, but when is required, priority is very, very important. Okay, so according to priority, try to prepare. Second thing is, most of our, because I am also from the small village, okay, Monnim, Maratham Taluka and Solapur district, and I did everything from the BSc junior college as a BSc from Shivaji College, Barsi. Most of our students or friends, they think, okay, suppose I got the good marks in the last year, suppose in the organic chemistry. They like to take the or master organic chemistry only. What is there? I got good marks, that's why. Okay, so please try to understand. You have to think about the future. Okay, your goal should be ready. Future. Then you come in the present and start the action. Okay, तुम्ही तुमचे स्वप्न पाहताय, ड्रीम पाहताय, I want to become the scientist, professor, बराबर आहे? तर त्याच्यासाठी ओके ते ड्रीम्स पहा, स्वप्न पहा, but you have to come to the present and start the action. काम करा, हार्डवर्क करा, प्लॅनिंग ने you have to do something work. Okay, so that's why it's required some positive in whole your body. Okay, if any people are saying negative things, don't worry. Okay, you have to think positive and create the positive atmosphere. Okay, it is very easy to achieve. Okay, because when you are entering this university, also Mumbai University is also very difficult, but we are shown that our potential and people are there to take care about that potential. Okay, so that's why past is not, means most of the students think about past, and I'm telling you, don't try think about the past. Past is past. Last year you got the 80% or you got the 3 KT. Okay, so that is happened. Now you have to think about the future, and according to your goal, your target, you have to come in the present and try to do the action.
Okay, without talking, without thinking, you have to start your action. And planning hard work is very important. Okay, so when you start, plan first. So I think last 4 days, I think I heard about the some session, some time Rasinga sir session, Bapu Sengte sir session, as well as Anbuli sir session. They are motivated. Rasinga sir also given the idea how to prepare, which way you prepare when you success. If you mistake is happen, then you fail it. Okay, but if you fail, don't stop there. You try to again prepare it and give the exams. Okay, that will be very useful. Now here, tricks is very important. Okay, I think most of these students, they try just read, mug up the knowledge, and because of the knowledge study, they try to solve the problem. Okay, this type of the competitive exams, just knowledge, you can solve the 50 to 60% questions, but remaining 40% questions is thinking based logic. Okay, some trick. Okay, so use the different types of the skill and try to solve the questions. Okay, now selection is very important. Okay, suppose you are in the some hotel, okay, top hotel, and there is a buffet system. Okay, if you order, then it is very according to cost and according to requirement you order. But in a buffet system, what is happening? If it's the 10 items there or maximum thing is there, then it is very difficult to choice. Okay, which first, I think if stays the first. Okay, like getting goods, then second भी first से अच्छा लगता है, third और अच्छा है. So similarly in this competitive exam is happening because you have the every questions, objective questions. So 4 option is there. When you read the first option, I think you think first option is correct. But when you go to the second option, तो आपके mind में वही question आता है, second option also correct. Third option, come to the fourth option. Okay, you confuse at this stage, so you should have the decision making. After the practice, you can try to the taking the decision. Okay, so out of 4, 1 is completely wrong, 100%. 1 is 100% correct, but this 2 option is confusing. Okay, so you should have the some expertise, means this answer, why this is wrong, why it is correct. Okay, means wrong answer also there. You don't try to only which is correct answers. You try to wrong answer first. Why is wrong? What is the reasons? Then what is the remaining? You have to think is correct answer. Okay, so decision, choice, and selection. Now I think organic, inorganic, whatever thing is done. Physical chemistry. Okay, I'm not saying just one topic you study. Okay, so according to weightage, check the question paper and weightage. Which subject, which topic have the more weightage? According to that, you have to select. This selection is very important. Suppose if is 100% student is there, out of the 100%, 90% student reject the quantum chemistry. They avoid. Okay, they come to the, if it's physical chemistry is there, okay, ideal solutions, chemical kinetics, basic thermodynamics, phase rule. Okay, this type of topic is comes. And just basic. Okay, basic से कुछ होता नहीं है, 10% basic होता है. Means basic is very important, but in this exam, you should understand basic and try to implement. Through the basic, you cannot solve the questions. But if you know the basic, you can come to that topic, clear the concept, and then try to implement. So please try to maximum. I'm not saying do the maximum topics from the physical chemistry. If it's 4 to 5 topics, if you've done, suppose first quantum chemistry, chemical thermodynamics, chemical kinetics, molecular spectroscopy, and electrochemistry. If this 5 topic, if you study, and in between that phase rules, small talk polymer, because polymer have the 1 numerical compulsory. Okay, 4 marks. That's why CSR exam 4 marks numerical, means number average, weight average, Z average, and polydispersivity index. So this type of problem you have to do the practice. Don't give the weightage to the polymer chemistry. You study the 5 days, 10 days. Okay, just 2 to 3 hours you can study and get the 4 marks from there. Okay, so similarly phase rule,
Okay, how to use the Gibbs page rule, A is equal to C minus P plus 2. And through that, 2 marks to question is comes. Okay, ternary system, binary system. Okay, and according to that, you should able to calculate. Okay, degree of freedom is A is equal to C minus P plus. Through that formula, degree of freedom or number of pages or number of components. Okay, but quantum chemistry, chemical thermodynamics, because you're studying from the first year BSc to the master level. Okay, so at this topic, 2 marks question. These are very basic questions, but when you come to the 4 marks question, you have to try to implement all the criterias and try to solve. So quantum chemistry, I think the weightage of the quantum chemistry is 26 to 28 marks. I'm saying minimum 26 to 28, and maximums are the 4 marks questions. So suppose 5 questions, there is 4 marks questions. And I think chalte in this session, I'll tell you, if you do the 10 points from that 5 questions, you get it. And other thing is 2 marks questions, that will be 3 or 4. That will get the 26, 28. I'm saying through the basic quantum chemistry or basics today's session, you'll get the minimum 20 marks from the quantum chemistry. Okay, so this way you try to solve the chemical thermodynamics, and when you study the thermodynamics, all the basics, why you are studying and why you have to implement, means how, why, what, when, where. This question you should ask continuously yourself. Don't ask to the others. Others will irritate and they will say, "Arey, this is a sample. ये कुछ भी कहता है, नेट से प्रिपरेशन करा दे, इसको कुछ भी क्वेश्चन पूछता है." Ask the others every time. You ask yourself. I think you get the answer from yourself, from your side. I think you will be very happy. Okay, so that way you start the preparation. So today we'll start quantum chemistry. I'm not teaching quantum chemistry, but how to use the quantum chemistry in the field of chemical sciences. Okay, quantum chemistry is not for the only net set or for to see the physical chemistry. Okay, by using the quantum chemistry or the equations, you try to solve the organic reactions, organic problems. Okay, as well as you can understand the symmetry, molecular symmetry, group theory of the molecules. And you come to the higher level, quantum symmetry and molecular symmetry, molecular spectroscopy is come to the similar level. Means from that, if you understood the point groups, you understood the delocalized energy or what is the shape of the molecule stabilization energy, then you can find out, or you understood spectroscopy. Means vibrational, rotational, Raman, IR, active or not active molecule. Okay, so you should come to that level and collaborate this quantum to the organic reactions, quantum to the inorganic chemistry, and I think that we'll be happy to solve the problems. The first concept, I think everyone knows that when you start the quantum chemistry, operator and function is very, very important. Okay, operator means when you operate the operator like this, H cap, and if you just 1 minute. Okay, this is the operator and this is the function. When your operator is operating on the function, barabar, new function means, simple example I'll tell you here. If you take the operator is just like as a operator, okay, and operate the operator on function, that is f of x, barabar. So when you operate the operator on the function, you will get another function. Suppose that is g of x. G of x. Now what is here? Operator. Operator is a mathematical symbol just. And it is operating on the function. You get the new function. Barabar?
So that is the beauty of quantum chemistry. The operator should be mathematical symbol is the real value. And when you operate on the function, that function should change. Okay. In organic chemistry, when the reaction takes place, operator A or reactant A to reactant product B. What is the arrow? What is the process is there? It's operation process. Okay. So operator everyone know the what is the operator is a very important in the quantum chemistry. That is the eigenvalue equation. Okay, eigenvalue equation. I'm telling you, when you study the spectroscopy, NMR, okay, all this concept of the principle of the spectroscopy, it is based on the eigenvalue equation. Okay, so what is the eigenvalue equation? Eigenvalue equation you can express in this way: Hamilton operator H, इसको क्या बोलते हैं? Hamiltonian operator. What is the Hamilton operator? Hamilton operator is the total energy. Hamilton operator is the total energy. What is the total energy? If you ask what is your energy, the total energy is nothing but kinetic plus potential energy. Kinetic plus potential energy. That total energy is nothing but Hamiltonian operator. Now this operator, when you apply on the function, okay, function, okay, so you will get the new function as it is. This you will get the function as it is. But what you will get? You will get the additional value that is called as the eigenvalue. That is called as the eigenvalue. And whole this equation is known as the eigenvalue equation. Means when operator is operating on the function remains as it is. What is the additional values there? That value is called as the eigenvalue. There is the condition, eigenvalue should be a real value. It should be constant and means real value. Now, this is just equation, but maximum problem is solved through this eigenvalue equation. So, I think जिसको quantum chemistry और physical chemistry अच्छा नहीं लगता, they can keep the some tricks. Example देता हूँ आपको. Okay. So suppose operator is the doctor. Operator is the doctor. And function is the patient. Okay. Now, doctor did the operation on patient. Doctor did the operation on patient. Okay. Patient. Now, what is happening? If patient is as it is, patient is as it is. After operation, patient is alive. I think I will not say that as it is. If is alive. Okay. जिवंत असला पाहिजे. Okay. Then what is the additional value? What is the additional value? तो जिवंत आहे म्हणजे has the positive or negative energy. When doctor did the operation on the patient, patient is alive. After the operation, patient will come at the home through the own car or through the ambulance. Through the own car is the positive energy, and if come through the ambulance is the negative energy. But negative energy is the real value. So that energy after operation, patient is walking, dancing, talking, that energy change. So that energy is called as the eigenvalue. And what you are the after operation, what you the patient is there, that patient is called as the eigen function. So are you understood? Doctor is the operator. And before operation, patient is there, just patient. But after operation, patient is, that is the function is there, patient is there, eigen function. And what you the energy change, that is called as the eigen energy value. Okay. Suppose you are entering in the MSc part 1. Suppose that is the example is Madhava is there. Okay, name of that student. And after completion of the MSc, finally his Madhava, Madhavi hoga nahi, Madhava hi rahega. Okay, but what is change? His degree change, knowledge change. Okay, when he entered in part 1 and after MSc, knowledge change. But here, who's the operator? I think your teacher, your mentor. Okay, teacher is here. I think very happy. You have to respect your professors, your mentors. Because of that mentors or teachers, your life is changed. And I'm here because of my teachers. Okay, who's given the direction through the Shivaji College Barshi's teachers. Okay, who's given the direction to come here. Okay, at this level. So teachers is very important. So please take care. Okay, teacher is the operator and you are the
function. But after operator is operating in function, you will be as it is. But what you change? Your degree, your knowledge. Okay, that is your eigen value. How to use this eigen 2 marks problem? You can solve easily. So I think most of the people will get the maximum things. So example will try to solve. Come to the direct this example. Which of the following is the eigenfunction for operator d2 by dx square? Okay. I think some of the participant is there from the suppose biology background. Don't worry here. There is only derivative sine cos sine. Okay. Sine derivative of sine is cos, positive forward direction. And if you take the derivative of cos, it's minus sine. Okay. Only that thing is there. Please don't worry about that. I think mathematics is there, derivative integration is there. That's why how to study. Okay. I'll give the tricks. You can get the answer also. Which of the following is eigenfunction operator d2 by dx square, so e raised to minus 3x square, e raised to minus 5x. These are the functions. Now I will try to solve first function. So operator is d2 by dx square. Okay, double derivative, and function is cos pi x. Now you know when operator is operating function means derivative operating on cos pi x. So please take care. First derivative you take it cos pi x. So cos pi x derivative is minus sin pi x, because when you go to the forward, sine to cos positive and come to the back, cos to sine minus. So cos pi x is derivative is minus sin pi x, and derivative of pi x is pi. Okay, this is pi additional. So here take the minus and pi outside. Okay, everyone's screen is visible. In between, if it's not there, please report it. Otherwise, yes, sir, visible. Yes. Okay, so this is the first step. Then you take the second derivative, sine, that is cos pi x, and pi x derivative is pi. So here, check, initial function is cos pi x, final function also cos pi x. What is the additional value? That is the minus 25. So minus 25 is the eigen value. Minus 25 is the eigen value. Now similarly, you try to second question, 25 sine 3x is there. Okay, you solve this sin 3x cos 3x 3x derivative 3 ऐसा करते करते चलो. Okay, तो minus देखो इधर 25 into 3 into minus 3. So some of the students what they do, you know, they will calculate 25 into 3 75 into 3 वो calculate करके वो बोलेगा eigen value. Okay, so actual eigen value is, okay, actual eigen value is 25 sine 3x as that should be as it is. So what is the additional value? 3 into minus 3 means minus 9. So minus 9 is the eigen value. Okay. So first, any trigonometric function is there, sine or cos. If you take the second derivative, even number, there is the eigen value. You take any sine or cos. Okay. This is the one function. Actually, only two functions have the eigenvalue. Other functions, there is no eigenvalue. So that is the tricks. Trigonometry function is there. You take the second derivative, 100% there will be eigenvalue. And second function is exponential. Okay. So which exponential? Don't take the e raised to minus 3x square. E raised to minus 5x have the eigenvalue. Look over there. Fourth example just e raised to minus 5x. So first derivative of e raised to minus 5x. So exponential remains as it is. Derivative of minus 5x is minus 5. Second derivative. Again, e raised to minus 5x as it is. Derivative of minus 5x is minus 5. So minus 5 into minus 5 is plus 25. So what is the original function e raised to minus 5x? That is remains as it is. What is the additional value? 25. So that is 25 is the eigenvalue. Means you take the exponential, any exponential function is there. Okay. So that will get the eigenvalue. But this exponential function e raised to minus 3x square. क्योंकि देखो
You take the derivative of e raised to minus 3x square. Okay, you will get minus 3x square. Minus 3x square derivative is minus 6x. Then take the minus 6 outside. Now here it will be two functions. This first function remains as it is. Derivative of function, derivative of second, x with x, derivative 1. Plus, second function remains as it is, x. Derivative of first, e raised to minus 3x square as it is. Derivative of minus 3x square is minus 6x. So ये solve करने के बाद you will get this common, but here minus 6x is there. That is not the real value. So that's why it's not eigenvalue. So whatever the value is there, eigenvalue, it should be real. Real means you should think about constant value. Okay? तो आप अभी x क्यूब का देखो, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x square, 3x square का क्या होगा 6x. But it's not original. That's why there is no eigenvalue. Please keep in mind only trigonometric and exponential have the eigenvalue. You take another example. कितने example लो आप? ln x is the derivative 1 by x and second derivative minus 1 by x square. There is no original function. That's why there is no eigenvalue. Similarly, 10x square, there is no eigenvalue. Then you can think 1 by x square, there is no eigenvalue. Okay? Means there is no function. Eigenvalue. So you solve any देखने का नहीं. Okay? This is from GATE 2023 exam. Just value function is different. E raised to minus 2x square is corresponding eigenvalue is plus. Okay, this is a question for 4 marks. Now, 2 marks question will use knowledge, okay, but 4 marks, please don't use any tricks. You have to solve because 4 marks don't take the risk, okay, and you have to success. I think told from the section E करने का, okay, and you have to give the priority. Miss part A में कितना हम knowledgeable नहीं रहते, जनरल क्वेश्चन आता है तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, but part B and part C you are the chemistry student, so knowledge of the chemistry, knowledge, okay. Most of the times Nobel winner also saying we have the knowledge of chemistry 10%, 2%, 1%. So you check your knowledge. I think you'll be in the fractions or sometimes 0.00. But then also attitude. Okay, I am the cell. When you compare with the others, you come for the competition, you realize. That's why I have the humble request to everyone. What you the knowledge you gain it, increase it, position is, but stay at the ground level, help to the others and try to solve the problems for others. We are the chemists, we are the, I think we say the scientists, because in the country, 90% people are there to create the problem only. And scientists, just 5 to 10% people are there resolve the problem. So you are from that category, that area. So please, because of our knowledge or because of our unsuccess things, others people should not get the problem. Okay, you are fail now, so tell to others why I'm fail. Okay, don't do that way. You try to this way. पर हम क्या करते हैं? मैं फेल हुआ ना तो दूसरों भी फेल करने का ट्राई करते हैं. Okay, don't do that way. I'll give the one example after that. They solve करेंगे. Okay, operator is there. Function is this. Just not write down first operator into function. Okay, so when you trying, okay, so this is operator. Don't confuse. I think online it is not that much effective. I think lecture should be offline. Then we get the okay. I have the habit 8 hours lectures for quantum chemistry. If it's 100 students also, there will not move here and there also. But it's offline. If it's online, then no controls. Okay, I can talk from this side. You are listening from that side. There is no interaction because without interaction, it is difficult.
Are you understanding thermodynamics? Okay, in the universe, there is two things, system and surrounding. Okay. If you select the part from that universe is a system and rest is a surrounding. Now, interaction between system and surrounding is very important. When system is ready to give the energy, surrounding should accept. And that's why energy of universe remains constant. Okay. So same as in the classroom also. Teacher is the system and whole class is the surrounding. When teachers are ready to give it, students should ready to take it. And I think that interactions, if his interaction is there with example explanation there, I think student will enjoy. Okay, that's why I think that offline it's a more effective. Chalo, this is operator this function. Now don't confuse, just e raised to minus 2x square is the function is there. Everybody know this function. Just multiply in the bracket. तो क्या होगा? d2 by dx square e raised to minus 2x square hoga minus this into this as it is. Okay. Now, don't do anything on this because that is completely function. Now, this first is there, operator and function is there. Okay. Function will not change anywhere without any operator. If operator is there, then you start the operation. Okay. This is the second derivative. So, first derivative e raised to minus 2x square. So, e raised to minus 2x square remains as it is, barabar. But what is the derivative of minus 2x square is? Minus 4x. Now, after taking first derivative, have the two function. This is first one and second one. Are you agree? Now, just take second derivative. So, first function remains as it is, barabar. First function remains as it is. Derivative of second function. What is the derivative of second function? Minus 4x है. तो क्या होगा? Minus 4 plus second function minus 4x remains as it is. Derivative of first function. What is the derivative of first function? E raised to minus 2x square. Okay. So e raised to minus 2x square as it is. Minus 2x square derivative minus 4x. Don't confuse. Okay. Means to achieve something. You have to focus. आपने को लगता है इधर का कार्बन उधर गया हो गया, चार वैलेंसी के 3 वैलेंस दिखाए हो सकता है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करने से डबल बॉन्ड जस्ट सर्कल ड्रॉ करो चलो होगा, इज नॉट पॉसिबल. ओके, आई थिंक you know the tertiary, secondary and primary carbocation, which is more stable? Anyone student can just answer it. Tertiary, secondary, primary. Okay, some will say tertiary, some will say primary without thinking. Okay, I think it's not required the knowledge of organic chemistry also. Suppose if 3 people are there, start the business of 1 crore. 2 people, 1 group, start the business 1 crore. 1 person is there, 1 crore. Now, positive charge means loss. Suppose if he lost the 1 crore rupees business, will be very happy. One person group, 2 person group, yeah, 3 person group. Yes, 3 person group because loss is all 3 groups. But 1 crore loss is shared by 3 people. They are comparing to others. See, our tendency is very different. देखो मैं एक example देता हूँ. If 3 people are in the group and result is declared, and suppose out of 3, 1 is pass and 2 is fail. You know who's very, very happy? Who's the pass is very happy. Why? It's not because of the pass, because of my 2 friends are fail. And 2 friends are unhappy because my one of the friend is pass. So this is comparison. If all 3 are pass, nothing will happen. कोई किसी को appreciate नहीं करेगा. But if it's all 3 are fail, all 3 are fail, I think party भी बन सकती है अपनी. पासिंग के लिए पार्टी नहीं होगा अपन. If all 3 are fail, मेरे साथ तू भी है, तेरे साथ तू भी है. Okay, so this is our attitude, this is our thinking, and that's why it is very difficult to achieve our success. Okay, I am telling you, don't wait for the coming result for the CSR net set. आज आपको एक concept clear हुआ, एक example solve करने को आया, you should be happy. You have to enjoy your success, small success. Don't wait for the big success. हम big success को देख के हम ऊपर जाने वाले हैं. Okay, तो you have to think about जितना भी छोटा सक्सेस मिलता है उसके ऊपर आप अप्रिशिएट
You should be happy 1,000 times also. It's a catalyst. You should become yourself catalyst. Nobody will help you. Okay, so please try to focus. Don't divert. किधर है इधर देखो. ये solve करो सब. Solve करने के बाद this is plus term, this is minus term. Cancel it. So what is remaining? Remaining is minus 4 into e raised to minus 2x square. Okay. सगळे ऐकतात ना? हाँ. तो ओरिजिनल फंक्शन बघा e raised to minus 2x square. Okay, that's as it is. But what is the additional value? Minus 4 is the additional value. So that is minus 4 is the eigenvalue. Okay. After practice, you will get the say this is a this is the answer. Question it was asked. Sorry. This question was asked. I am giving the example this one. तो ऐसा ही एग्जांपल एवरी क्वेश्चन पेपर 4 मार्क्स एग्जांपल मिलेगा आपको. गेट के लिए, टीआई पर के लिए, सीएसआर नेट के लिए, सेट के लिए 2 मार्क, बाकी एग्जाम के लिए 4 मार्क के लिए. एंड ऐसा देखते हैं ना कोई वो ट्राई नहीं करता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द हैबिट. आई थिंक सर ने लास्ट टाइम बोला था एनालिटिकल का ये क्वेश्चन होता है, फिजिकल ऐसा परसेंटेज में बोला. बट यू नो इफ यू आस्क टू द मोस्ट ऑफ द दोस आर गिवन द एग्जाम एंड दे कम आउट फ्रॉम दैट, उनको पूछा ना कितना फिजिकल के क्वेश्चन, नहीं बोलते फिजिकल क्वेश्चन नहीं था, ऑर्गेनिक था. ऑर्गेनिक. अभी सपोज वो क्वांटम केमिस्ट्री में डिलोकेलिस जो बेंजीन रिंग और साइक्लोब्यूटेन दिया ना, वो भी बोलेंगे वो भी ऑर्गेनिक की क्वेश्चन है. मींस रिंग देखा, स्ट्रक्चर देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अरे वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. जस्ट आपको स्ट्रक्चर देके, रिएक्शन देके कुछ नहीं होगा. स्पॉन्टेनिटी, व्हाट इज द स्पॉन्टेनिटी? सब आपने मिक्स किया है, कुछ हुआ ही नहीं. तो व्हाट इज देयर? लिबरेशन. You understood that? It was entropy, what you were the free energy, enthalpy. So please take the energy from the, I think what you were the last 4 days session was there. This is not for the only certificate or something. So you have to take the positive energy. Okay, so this type of example is there. Show that cos ax, cos by, cos z is eigenfunction of the operator del square. Del square is the Laplacian operator. अभी देखो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कोई सॉल्व करता ही नहीं. ऐसा लगता है उनको ये cos and cos ax, cos by, cos z क्या है, क्या मिलेगा, ये del square क्या है. ये del square is nothing but Laplacian operator just. Derivative with respect to x, y and z, double derivative. Okay, and this is the function. Now what is the function? Why to study? I think आपको एक दिखा था इधर. पहले दिखाता हूँ, then we'll go there. I'll show the function. Means what is the condition? Function, f of function can be accepted. Why it is called as well-behaved function? Is acceptable or non-acceptable? Means function should be continuous. Okay, see here, continuous. Then function should be single value. Single value means either crest or trough. You know everybody, crest have positive amplitude, trough have the negative amplitude. And on the nodal place, 0 amplitude. It should be single value. Function should be square integrable. Yeah, you can say should have finite value for all the values of x. Means you substitute the value of x, anything. But उसका function जो भी आएगा, उसका क्या होना चाहिए? Finite value होना चाहिए. So these are the acceptable wave function. These are the non-acceptable wave function. Why have to study the function? And function is expressed in the form of psi of xt. Are you agree, everyone? इस कैसा लिखते function? Psi is the wave function, बराबर? And with respect to, x, t. Psi of xt. What is x? X is the displacement, or you can say the position, and t is the time. Okay. Now, why have to study this? What is the importance of the psi of xt?
Say everywhere function is there, operator is there. Why have to study this function? And why it is important psi of xt? Suppose now anybody come searching to you. आपने बोला now I'm in the Balbhim college beat chemistry department. बराबर. And suppose that person is comes to search you at the evening 10 p.m. या last early morning. It is possible? आप मिलेंगे उधर? नहीं. So what is important? When that particle means क्या है? Electron is moving around the nucleus. Okay? If it's along the x-axis रहेगा तो क्या बोलते हैं? One dimensional box. If it is two axis रहेगा तो two dimensional box. If it's three axis होगा तो three dimensional box. But there is no axis. Particle is moving around the nucleus. This electron moving around the nucleus means particle on sphere. Sphere means polar coordinates. X, Y, Z क्या है? Cartesian coordinates है. जब आप स्कूल में थे, you are just fixed with respect X, Y, Z, Cartesian coordinate. मीन्स आप घर से बाहर निकलते तो फिक्स मालूम होता था कि अड्डे पे रहेंगे. If parents come, there is fixed. ए अड्डे पे है. But now your particle is big. बड़ा हो गया ना? Now particle is moving 360 degree. Okay? If parents come to find out, it is difficult to get it. So when electron is moving around the nucleus, so what is important? Position as well as time. Okay? Suppose आपने बोला कि 4 बजे मैं बल्बिम कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. टाइमिंग दो 2 to 4 p.m. So that person will come in 2 to 4 p.m. and will meet it. That's why when you understood the information of any particle, we have to express in the form of psi of xt. अभी कोई तो बोलेगा ये क्या स्टडी करने का क्वांटम ये कॉम्प्लिकेटेड है. Yes, you know, you are studying the energy of particles. Now, thermodynamics also giving the information of energy of particles. Barabar? Quantum also giving the information of energy of particles. But what is the difference? Why have to study the quantum? Chalo na. We'll study the thermodynamics, we'll get the information. Okay? Through the thermodynamics, we get the information of particles. Okay? Energy of particles. But that particle is macro. 100 kg का भी particle हो सकता है like you. 10 kg means visible. You can easily observe it. You can study. No problem. बराबर है ना? आप दिखते तो बोलते हैं ना, you are good, you are looking very good. Means you are easily observable, easily understanding, you can study easily. But particle like electron is there, mass is 10 to minus 31 kilogram. Possible? नहीं है. So is the equation, eigenvalue equation. Through that we understand the information. So please take care about that. Why you are studying, and why not studying. So that information about the particle. Example देने का तो देखने का तो दिखाता हूँ. Sorry, यहाँ function क्या है? Sin x, बराबर. And this sin x, just you find out. अभी आप this is we are included the experiment in the Mumbai University as well as now Solapur and Surat University also. Say here, x value minus 360. मैंने क्या डिफरेंस लिया इधर 30 sin minus 271 है. ऐसा करके सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद देखो all the points you take minus 362. देखो this point. तो इससे क्या मालूम हुआ? Unconnected. Since above mathematical function that is f of x equals sin x is continuous, single value. Why it is called as single value? Continuous तरह है. Why it is called as single value? Because either crest or trough is there. And finite for all the values of x. So substitute करो any x value, you will get the finite value. And that's why this function is an acceptable wave function. So ऐसा example देखो, ये tan x देखो, solve करो, देखो इधर tan minus 270 infinite value है, तो it is not acceptable. What is the condition? Continuous होना चाहिए, single value and finite. You substitute the value of x anything, but final value should be
फाइनाइट, तो ये क्या होगा, नॉन एक्सेप्टेबल, बराबर। हाँ, एक्सेप्टेबल को आप वेल बिहेवियर बोलो, नॉन एक्सेप्टेबल को नॉन वेल बिहेवियर। तो ये फंक्शन देखो, ओके, एक्सेप्टेबल है। ये देखो अभी इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पर ये वैल्यू इंक्रीज किया एक्स वैल्यू, तो क्या होने वाला है, इन्फिनाइट वैल्यू आने वाला है। दैट्स व्हाई देखो एक्स इज इंफिनिटी ना, एफ ऑफ एक्स इज आल्सो इंफिनिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज e raised to plus x square is non-acceptable. Non-acceptable means non-valuable. So similarly, you can solve this. Just use the calculator. We are make the software also through the computer also. You can try it. Non-acceptable. Huh? This just function accept. So now when you are studying this, okay, just हमने eigenvalue equation देखा. हाँ. कोई जस्ट अभी 4 मार्क का प्रॉब्लम है. इफ यू डू द आइगन वैल्यू इक्वेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, 4 मार्क्स फिक्स है आपके. ओके, तो देखो ये ऑपरेटर एंड साइन, तो ये आंसर देखो इधर, ऑपरेटर जो भी है, सॉरी हाँ इधर ही, हाँ डेरिवेटिव एज इट इज लिखो, एंड cos ax cos by cos cz जस्ट मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करो. और अभी क्या होगा, ये विथ डेरिवेटिव विथ x है, तो क्या होगा, ए बी वाई एंड सी जेड कांस्टेंट रहेगा, एक्स फंक्शन रहेगा. सिमिलर विथ वाई, तो बी वाई कॉस बी वाई फंक्शन रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट, एंड यू नो कांस्टेंट शुड बी रिटन बिफोर डेरिवेटिव. तो ये देखो इधर, हाँ लिखा सब कांस्टेंट बिफोर डेरिवेटिव. तो अभी डेरिवेटिव कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, cos x का माइनस साइन एक्स, आणि एक्स का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, तो ऐसा 2 बार होके साइन का दिन cos आएगा, तो cos देखो cos ए से आया, पर डेरिवेटिव क्या है, पहले में माइनस ए, दूसरे में ए, तो माइनस ए स्क्वायर. सिमिलर हियर माइनस बी स्क्वायर एडिशनल टर्म, हियर माइनस सी स्क्वायर. अभी देखो cos by cos cz into cos ax, what is common? Similar here, minus b square minus c square, what is common? The common is cos ax cos by cos cz. ये सॉल्व करो and take the common. So what is remaining? तो माइनस भी बाहर निकालो, तो a square plus b square plus c, देखो is a constant term, a and b and c is the constant. So that's why saying del square is a eigen operator and this is eigen function. Okay, so please try to solve. We'll share the presentation also. तो 4 marks fix है आपके इसमें. Okay, now next linear operators, another type of operator. Now in this linear operator, only 2 conditions is there. Here also to get the 2 or 4 marks fix है, within 1 hour we'll get them. When you study, do the practice, 1 hour practice करो, 2 या 4 marks ले सकते हैं. So there is 2 condition. One, first condition is operator is there. Operator is operating on addition of 2 function. Addition of 2 function, f of x plus g of x. Now when you operator is operating on addition of 2 function, so operator A f of x plus operator A g of x. Okay. Similarly, you can try to second condition. Case 2, operator A operating on constant function. So everybody know constant remains as it is. Operator is operating. Using these 2 conditions, you solve the problem. 4 marks, you will get it. So पहला condition क्या है? Operator is operating on addition of 2 function. बराबर? तो operator function plus operator second function. This is the first condition, and second is operator is operating on constant and function. Constant remains as it is. So I'll tell you, out of these 2 conditions, any one condition is satisfied, या both conditions satisfy linear operator. Any one also. If both conditions are not satisfied, that is non-linear operator. And keep in mind, second condition will not satisfy. Only first condition will satisfy. तो आपको चेक करने का है, तो इधर एग्जांपल दिए आपको. Find out the following operators are linear or non-linear operators. तो ये ऑपरेटर ये ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, एक्सपोनेंशियल, डी बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन डी एक्स. इसके बाद एक ट्रिक है, कौन सा लीनियर है कौन सा नहीं है वो मालूम हो जाएगा, बट पहले ट्राई टू सॉल्व. हाँ, ये ब्रैकेट स्क्वायर है, इज ऑपरेटर. फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन, एडिशन ऑफ 2 फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ब्रैकेट स्क्वायर. एंड यू नो द रूल, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. सिमिलरली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स.
but is not equal to that first condition. Therefore, since above solution does not obey any of the cases, first second condition तो आएगा ही नहीं because there is no constant. So that's why since above solution does not obey any of the cases 1 or 2, and hence bracket square is non-linear operator. तो linear operator होने के लिए कैसा आना चाहिए? f of x plus g of x bracket square is equal to f of x square plus g of x square. ऐसा आता तो is a linear operator. Is not there. That's why non-linear operator. Similarly, square root also non-linear. Everybody know. Trigonometric. Suppose आपने sin of f of x plus sin of x, तो sin a plus sin b करेंगे तो is not equal to sin a plus sin b. That is also non-linear. Exponential. e raised to x plus y. ऐसा लिखते हैं आप e raised to x into e raised to y. Is not writing e raised to x plus y. Okay. So look about this. This is also not. So exponential also non-linear operator. तो कौन सा है? Only two operators. So derivative and integration. तो देखो derivative d by dx is operating of the function f of x plus g of x. अंदर लिखो d by dx f of x plus g of x. The first condition is the linear operator, and second integration dx. So integration and addition of two function f of x plus g of x. बराबर? Solve this. Integration f of x dx plus integration gx dx. So this is also satisfying first condition. That's why integration dx is a linear operator. So everyone, ये मत देखो इतना कहीं जरूरत नहीं क्वांटम केमिस्ट्री डिटेल स्टडी करने के लिए, पास होने के लिए बहुत इजी है. कितना भी फंक्शन हो दे ऑपरेटर हो, only these two, derivative and integration, only these two operator are linear operator. Are you remembering? याद आएगा? Just derivative and integration. These are the linear operator. 2 मार्क मिलेगा. पर आपको 2 से नहीं, आपको 4 चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसके ऊपर बेसिक है 2 मार्क्स. पर 4 मार्क के लिए देखो, show that the vector operator del या Laplace operator del square are linear operator. ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए देखो. You know del लो या del square, उसमें क्या है? डेरिवेटिव. If derivative is the linear operator, del square also linear operator. Suppose आप कर्ड बनाते हैं, milk is the linear operator. Suppose example is milk is the linear operator. तो milk से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं, पनीर बनाते हैं. तो कर्ड पनीर also linear operator. So similar here, if derivative is the linear operator, तो the Laplacian दे दिया रहेगा नहीं. तो आई थिंक डेल स्क्वायर यू कैन शो इजीली इज अ लिनियर ऑपरेटर. तो अभी आपको देखो इधर शो, आई थिंक यू हैव द स्किल. आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा, रीजनिंग, जस्ट थिंकिंग बेस्ड, आंसर नहीं आएगा. बट इफ यू डिस्क्राइब, तो वी आर स्टार्टिंग 4 to 5 pages आंसर. बराबर? I think you have the habit, 5 pages, first paragraph correct, then in between, just masala. We spoiling what you are the answer you are written. Means our habit is completely different. Okay, we don't have the start. We don't start the thinking base, reasoning. Okay, so please take care. Okay, explain, describe वो जरूरत नहीं आपको. आपको क्या चाहिए? Concept clear होना चाहिए. And then you start to try to implement. अभी आपको derivative integration हुआ तो आप अभी एंगुलर मोमेंटम लो, लीनियर मोमेंटम लो, एनीथिंग यू टेक, हैमिल्टन ऑपरेटर लो, लैप्लासियन ऑपरेटर लो, दैट ऑल आर लीनियर ऑपरेटर. व्हाई? बिकॉज हैमिल्टनियन लो या लैप्लासियन उसमें डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव इज अ लीनियर, तो दिस इज आल्सो लीनियर ऑपरेटर. तो प्लीज टेक केयर. ये 2 मार्क के ले रही है. बट इफ यू गो टू द हैमिल्टनियन linear momentum operator, Laplacian, that will comes for 4 marks. Okay, so are you understood the concept of the linear operator? तो 2 या 4 मार्क्स ले सकते हैं. Now next concept, commutative operators. Okay, commutative operator, just आप ये देखो, operator AB psi minus BA psi is equal to 0. Means you can say if AB psi
माइनस बी एस आई इज इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलते हैं आप, कॉम्यूटेटिव, ऐसा रिप्रेजेंट करने का। एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्यूटेटिव। अभी डिफरेंस क्या है, देखो ए बी साई का मीनिंग क्या है, फर्स्ट बी इज ऑपरेटिंग ऑन द साई एंड देन ए। बी एस आई का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ए इज ऑपरेटिंग एंड देन बी। तो हियर प्रायोरिटी चेंज, एंड बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी व्हाट एवर द इफेक्ट इज देयर, it is different. If effect is different, that is a non-commutative. If effect is similar, then it is called as the commutative. Okay? Suppose आप दूसरे को थप्पड़ पहले मारो और दूसरा आपसे मारेगा, and then change. Priority give first. दूसरों से आप से दूसरे. So change the priority. Effect is same, commutative. If it is not, non-commutative. Okay? So I think in our Mumbai local train, mostly non-commutative properties apply. If anybody got the window seat at the 9:30, 8:30 morning, okay, that person will not ready to change the seat. Person can change in the plane, but not in the local train. तो local train में I think mostly non-commutative property follow होते हैं. Okay, तो उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. या अभी देखो इधर भी 2 मार्क और 4 मार्क. ये प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर इज देयर ना, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, एंड सॉल्व करने का ही ना 4 मार्क के लिए रहेगा. तो सपोज ए बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0 मींस ये कम्यूटेटिव हुआ. अभी जो डिस्कस किया, द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस व्हिच इज इक्वल टू दिस, बराबर. अभी देखो एंटी कम्यूटेटर ए व्हिच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, एंटी कम्यूटेटर. एंटी सिमेट्री देखो कैसा लिखा इधर, ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस बी. देखो पोजीशन चेंज, साइन चेंज हो, इसको क्या बोलने का, एंटी सिमेट्री कम्यूटेटर ऑपरेटर. देन लिनियरिटी कैसा देखो, ऑपरेटर ए ऑपरेटिंग ऑन, ज्यादा आप टेंशन मत लो, ऑल आर लिसनिंग. I think we know our mind is not stable for 10 minutes also, but we have to make the stable. कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ेगा, या कुछ पाने के लिए जो भी डायलॉग है, you have to implement it. Okay, you want to success, तो बहुत स्ट्रगल होना पड़ता है. Struggle will give the something outcome. Okay, and देखो I think everybody knows the Bapu Singh sir. I respect that person. Why? He is a very expert in the organic chemistry research में तो है. Organic chemistry में उसके पास 10 स्टेप का रिएक्शन लेके जाओ ना तो 12 स्टेप का रिएक्शन लेके जाओ. ऐसा पर्सन है कि विद इन द टाइम वी कैन एक्सप्लेन. हम इधर 1-2 स्टेप में गड़बड़ करते हैं. ओके, दैट्स व्हाई बापू सिंह सर हैव द लॉट ऑफ वैल्यू. ओके, स्कोप है, एक्सपर्टीज है, किधर भी जाओ कहीं. अरे उनके एक सेशन में 20,000 25,000 देते हैं. सी यार, वी स्ट्रगल फॉर द 1 मंथ सैलरी. इसलिए एक्सपर्ट बनो. अभी स्ट्रगल हो जाओ. एट दिस स्टूडेंट लेवल स्टडी. टुडेज रीडर, टुमारोज लीडर. इफ यू रीड टुडे यू कैन लीड टुमारो. हम आज रीड कर रहे हैं तो कल रीड करने वाले. ओके, तो रीड करना पड़ेगा, बहुत ही रीड करना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एंड देन हैव द वैल्यू. ओके, आई थिंक राशिद सर के लेक्चर में मैं बीएससी में होता था, अभी लास्ट 25 ईयर्स से लेक्चर उनका है, सुना है. जब हम बीएससी में थे, लेक्चर में बैठते थे, ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. वो बोलते हम कुछ प्रिपेयर करना, सक्सेस होने का वो पहले माहौल बनना चाहिए, वो पॉजिटिव माहौल. उनका जो बोलने का स्किल है. ओके, तो एवरीवन हैव द डिफरेंट एक्सपर्टीज. ओके, तो प्लीज डोंट कॉपी टू अदर्स, बट ट्राई टू, यू हैव पोटेंशियल, जस्ट यू शुड एक्सप्लोर. एंड जरा लैंग्वेज, क्योंकि हम जरा सोचते हैं, तो प्लीज व्हेन यू एक्सप्लोर योर सब्जेक्ट, सामने वाला सुनने वाला नहीं रहेगा. पोटेंशियल है, ऑडियो है, थिंकिंग है, एग्जाम्पल दे रहे, तो सामने वालों को सुनना पड़ता है.
Okay, and that will be very useful your skill in the interview presentation time. Okay, so please take care. Just don't prepare the chemistry. अरे इतना भी स्टडी मत करो, नहीं तो पागल बनना पड़ेगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ दी, मेरे को तो अभी तो बोल रहे 20-30% केमिस्ट्री में लोग पागल ही है. हाँ, ऐसा बड़बड़ करते हैं तो सामने वालों को कुछ समझता है नहीं समझता. आई थिंक मोस्टली इन द फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, अच्छे टीचर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिलेंगे, पर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बेकार टीचर मिलेंगे आपको. दे एक्सप्लेन दैट वे, सामने वालों को कुछ समझना नहीं चाहिए, तो ही मालूम हो जाएगा ये ग्रेट प्रोफेसर है. हम सिंपल वे एक्सप्लेन किए तो बोलेंगे इनको कुछ आता नहीं. ओके, तो डोंट डू दैट वे. आप जब आपका प्रेजेंटेशन करेंगे, कोई भी बैठने दो घर पे. ओके, एंड आई थिंक आज के सेशन के बाद जाओ घर पे जाके. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट, और अभी घर पे बैठे चाय भी नहीं मिल रहा है. हाँ, सुन के. हाँ, बिकॉज पोजीशन नहीं ना. तो आई थिंक अगर आपके घर पे कोई रिस्पेक्ट करता नहीं ना, यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस डेरिवेशन. तो एक फायदा, दो फायदे. पहला क्या होगा, उनको कुछ समझेगा नहीं. That's why they will not ask the question. And we are very happy if nobody asks the question, our confidence is very high. Presentation session everywhere. Okay, second thing. Okay, so if not understood from others, so they will, I think, अरे इसके पास knowledge बहुत है, तो they will give the respect, value, scope. हाँ, तो please try to that and try to implement also. मीन्स ऐसा नहीं कि नेट सेट वर्कशॉप के आपको स्टडी करना. आप बहुत ग्रेट है, आपको नॉलेज है, गोल्ड मेडल है, 70% 80%, अभी तो वो ग्रेड मिल रहे सबको. तो यू हैव दैट मच, बट इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट करते टाइम, डिसीजन लेते टाइम आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए. आपके फेस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये 24 आवर्स डिप्रेस मूड में रहता है. किसके लिए डिप्रेस मूड, क्योंकि लिए क्या रीजन मालूम नहीं. ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 24 आवर्स यू आर लाफिंग आल्सो. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म, यू हैव टू चेंज योर लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, एक्सप्रेशन, दैट कॉन्फिडेंस, दैट यू हैव टू ट्राई इट. ओके, लिनियरिटी समझ में आया? चलो, क्योंकि इन बिटवीन वी हैव टू गिव द एग्जांपल, अदरवाइज ऑनलाइन में है तो कोई आराम से उधर चाय, ब्रेकफास्ट सब कुछ चलता रहेगा, और हम इधर केमिस्ट्री का क्वांटम केमिस्ट्री. और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी सबसे अलर्ट रहती है. हाँ, क्योंकि इट इज नॉट ऑडिबल, इज नॉट विजिबल, टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो वही मिस, आई थिंक उनके लिए सेशन ऐसा लगेगा. ओके, तो प्लीज अदर पीपल्स आल्सो यू कैन एंजॉय द टी और ब्रेकफास्ट, बट यू हैव टू लिसन समथिंग एंड जस्ट डोंट लिसन ओनली. आज सेशन में सुनो, 5:30 के बाद थिंकिंग करो. देन discuss with your expertise and try to implement. So linearity is operator A is operating on operator B plus C plus D. तो उसका आंसर क्या है? Operator A is operating on B पहला, plus operator A is operating on C second, operator A is operating on D third. इसको क्या बोलते हैं? Linearity. This is asked for the 2 marks. They will give the question and बोलेंगे एंटीसिमेट्री का लिनियरिटी है, का डिस्क्रिप्टिव है, का कॉम्यूटेटिव है, का जैकॉबी है. तो जैकॉबी आइडेंटिटी, ऑपरेटर ए ऑपरेटिंग ऑन बी सी प्लस ऑपरेटर बी ऑपरेटिंग ऑन सी ए प्लस ऑपरेटर सी ऑपरेटिंग ऑन ए बी इज इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं जैकॉबी आइडेंटिटी. देन हर्मिशियन कॉन्जुगेटिव कम्यूटेटर, देखो इधर ए बी इज इक्वल टू बी है, बन क्या है? ए बी हैश, तो इधर क्या हुआ? बी हैश कॉमा ए हैश. इसको बोलते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्यूटेटर. ओके, ये प्रॉपर्टी के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्लीज गो थ्रू दिस. 4 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी अबाउट दैट. सी इफ ऑपरेटर इज डी बाई डी एक्स, ऑपरेटर बी इज 3x स्क्वायर एंड फंक्शन इज साइन एक्स. बराबर, तो आपको क्या दिखाने का है? ए बी एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट BF of x, means AB of x minus BF. If is equal to 0, commutative, not equal to 0, non-commutative. तो चलो फर्स्ट हम क्या करेंगे? ये AB of x देखेंगे. बराबर, AB of x is equal to, तो ये क्या है? d by dx. B क्या है? 3x square and f of x is sin x. Now tell me derivative of these 2 terms. तो फर्स्ट टर्म as it is, derivative of second term sin का cos. ओके, इधर क्या है? माइनस sin का cos, प्लस cos है, नॉट माइनस, तो मिस्टेक है. Then sin x as it is, derivative of 3x square is
6x। तो जो भी सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम। सिमिलरली b f of x, तो b फर्स्ट a एंड देन f of x। तो इधर क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस cos x, आई थिंक माइनस मिस्टेक होगा। तो अभी देखो, अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज सिमिलर, नो, ab f of x is not equal to ba f of x is not equal to 0, so this operator is non-commutative। आई थिंक आप दूसरा एग्जांपल लेंगे डेरिवेटिव, तो दैट विल बी कम्यूटेटिव। मैं क्या बोलने वाला है, ट्रिक है इधर, if both operator are from the same category, this is the derivative, first derivative, second derivative, function what will there, no problem, but both the derivative from the either from integration या from the derivative, both are derivative term, then it is commutative, both are integrative term, commutative, but here is one is derivative and the other is 3x square sine, any operator is there, then that is the non-commutative। okay, अभी ये आपको सॉल्व नहीं करने का एग्जाम में, जस्ट 4 मार्क का प्रॉब्लम है, बट ये थिंकिंग करो व्हाट इज द ट्रिक्स इज देयर, हाँ 4 मार्क के लिए। आई थिंक ये सॉल्व किए हैं एग्जांपल, देखो आप ये ट्राई करो। देखो ऑपरेटर इज डी बाई डी एक्स, ऑपरेटर बी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d एंड फंक्शन इज साई, बोथ आर डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव टर्म में, तो देखो ए बी साई ए एंड बी, सॉल्व करो ब्रैकेट, तो क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, बराबर। सॉल्व द बी ए, मींस फर्स्ट ए ऑपरेट एंड देन बी, तो ये सॉल्व करो, देखो तो बी थर्ड डेरिवेटिव एंड 2 टाइम्स, तो इक्वेशन 1 एंड 2 इज सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई ऑपरेटर ए मींस डी बाय डीएक्स एंड ऑपरेटर बी इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर। ओके, तो दैट वे यू कैन सॉल्व इट। हाँ, अभी ये क्वेश्चन है, देखो 4 मार्क के लिए। अभी मैं आपको देखो इधर ही आपको 6 भी कंसेप्ट क्लियर हुए ना, तो यू विल गेट द मिनिमम 4 पंचे 20 म्हणजे 20 मार्क्स। तुम्ही तिकडे फोटो केमिस्ट्री, पेरिसायक्लिक, आई स्टडी मैक्सिमम फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, सिलेक्टिव नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इतने रिएजेंट करने के बाद now is the some of the organic question is come from the directly research papers, तो देखो, तो that's why तीनों प्लान करो, तीनों सब्जेक्ट, ओके, स्पेशलाइज, मैक्सिमम, मेजर लोको एंड बाकी 2। और अभी पहले क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक थोड़ा इजी होते होते अभी ऐसा हुआ है लास्ट 2 एग्जाम से इनऑर्गेनिक वाज क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट, तो ऑप्शन होना चाहिए ना आपके पास, तो please try to, and I think not only for the success the exam, but when you teaching your subject organic chemistry, you know, anything, you can try to use this concept। देखो, when I study teaching the physical chemistry and I just say the derivation, no meaning, I take all the examples, all the reactions and then implement this example, okay, equation to the organic reactions। तो अभी देखो ये आपको सॉल्व करके नहीं देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन द ऑपरेटर माइनस h क्रॉस स्क्वायर d2 by dx स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन द e raised to minus i kx, तो दिस इज द आंसर। अभी देखो आपको क्या करने का है, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर ए को एंड फंक्शन है, अभी फर्स्ट यू टेक द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंस का डेरिवेटिव क्या होता है, यू टेक एनी एक्सपोनेंशियल एज इट इज, बट माइनस दिस i kx, डेरिवेटिव क्या आएगा, कोई तरह से x माइनस i k, ऐसा 2 बार करने का है, माइनस आई के इंटू माइनस आई के, आई स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, ओके, एंड देन रीअरेंज, तो दिस इज द आंसर। तो देखो e raised to minus i k एज इट इज है अर्लियर, व्हाट इज एडिशनल टर्म, अभी एडिशनल टर्म आपको आइगन वैल्यू ने पूछा, आपको आइगन कंसेप्ट से वैल्यू पूछ, तो देखो व्हिच इज करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द correct answer। How many people think it, because स्क्रीन पे देखो इतना बड़ा दिखता है क्वेश्चन प्रॉब्लम, ये कुछ अलग अलग ही नोटेशन दिखता है, बट आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कितना सिंपल है, मीन्स यू ट्राई टू राइट ऑन द पेपर
You try to write on the paper and try to explain. I think your teachers, your mentor, your expert saying that every time. काय म्हणतात 10 वेळेस लिहिण्यापेक्षा एक वेळेस एक्सप्रेस ऑन द पेपर, एक वेळेस लिहा पेपर वरती. दॅट कॉन्फिडन्स इज डिफरंट. जस्ट रिव्हिजन नो मीनिंग. ओके, रीड इट, थिंक इट एंड एक्सप्रेस ऑन द पेपर. मैं तो बोलता हूं ऐसे प्रिपरेशन के टाइम ग्रुप होना चाहिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल ऑल्सो. और आपने तो को मालूम है अपना ग्रुप काम होता है तो पार्टी होता है. When what is the outcome is required is not getting. So please take care. Physical person have the expertise in physical chemistry. आप स्टडी करेंगे तो 10 दिन लगेगा, पर वो फिजिकल पर्सन से आपको एक्सप्लेन हुआ वो 2 घंटे में क्लियर कंसेप्ट हो सकता है. ऑर्गेनिक वालों को हैव द ऑर्गेनिक स्किल, ही कैन एक्सप्लेन पेरिसाइकिल केमिस्ट्री, डिस रोटेशन, कॉन रोटेशन क्या है, 4Q सिस्टम है, 4Q प्लस टीम है, थर्मल अलाउड का, फोटोकेमिकल अलाउड है. विद इन द 2 to 3 hours that is have the expertise. Then our inorganic chemistry, symmetry, principal axis, plane of symmetry, this, NC2, C2, ये करेंगे within. Means everyone have the expertise come together. And I think it is. आणि बोलण्याने, डिस्कशनने, रीड करू नका. रीड करून डिप्रेस मध्ये जाचाल आणि काही आउटकम मिळणार नाही. पण तुम्ही 3-4 जर ग्रुप बनवून एकत्र आला, डिस्कस करायचं आणि कधीही त्यांना डिमोटिवेट करायचं ना कोणी कोणाला. मोटिवेट, अप्रिशिएट करा. अरे यू हॅव दॅट मच स्किल, अप्रिशिएट. ओके, अँड बिकॉज ऑफ द पॉझिटिव्ह ऍटमॉस्फिअर आय एम टेलिंग यू. हे जे पुणे युनिव्हर्सिटीला आम्ही असताना सुतार गल्लीत येत होतं ना, NCLच्या समोर काय ग्रुप व्हायचे. औरंगाबादचे काय किती ग्रुप येऊन बघितले. सक्सेस आय थिंक नांदेड, औरंगाबाद, लातूर, ये सक्सेसिंग रेट इज वॉज व्हेरी हाई. 2006 to 2016 अभी भी चालू है. ओके, तो दिस इज द आउटकम बिकॉज ऑफ दिस टीम वर्क. बघा, आय थिंक तुम्ही 4 लोकांशी तुम्ही इंटरॅक्ट होता म्हणजे स्किल वाढलं ना. आपल्याला एका मित्राबरोबर सुद्धा व्यवस्थित म्हणजे रिलेशन मेंटेन ठेवता येत नाही. 1 वर्ष तर त्याच्याबरोबर भांडण चालूच होतं. एक्झाम आले की मीन्स वी आर सेल्फिश, दॅट्स वाय प्रॉब्लेम कम्स. ओके, जरा तो सेल्फनेस काढा आणि ट्राय टू हेल्प टू अदर्स ऑल्सो. इफ यू हेल्प टू द अदर्स दे विल ट्राय टू हेल्प यू. ओके, आता हे स्क्रॉन्डिजर इक्वेशन आहे. भरपूर जण टेन्शन मध्ये येतात. ऍक्च्युअली SI इज इक्वल टू SI, ते आयगन व्हॅल्यू इक्वेशन आहे. दॅट इज द स्क्रॉन्डिजर इक्वेशन. Just you substitute the value of Hamiltonian, rearrange, so that will get this. And because of the Schrödinger equation, don't worry, don't take tension. We don't want the derivation or something. Just take the equation concept and try to implement to 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, and particle on a sphere. Okay. आणि बघा, तुम्हाला माहित आहे, I think one question is everyone. Cyclobutadiene and 1,3-butadiene. सगळ्यांना माहित आहे. Cyclobutadiene and 1,3-butadiene. Now 1,3-butadiene at room temperature spontaneous reaction takes place. कौन सा भी reaction लो आप हो सकते हैं 1,3-butadiene. But cyclobutadiene there is no reactions. Why? Because when you solve this focal molecular orbital, use the quantum chemistry. Okay, so what is happening? Cyclobutadiene delocalization energy is 0. And 1,3-butadiene have the delocalization energy. Means you can form the secular determinant, energy levels, bonding, anti-bonding, non-bonding, and find out the delocalization, pi bonding, total energy, and delocalization. So this is the outcome from this Schrödinger equation. I think mic चालू नाही, otherwise very difficult. Sir, 1-2 मुलांचं माईकचं काही क्वेश्चन आन्सर करू शकतात. मला जस्ट इंटरॅक्ट करायचे. You know the anthracene molecule, everyone? I think organic molecule सबको मालूम है. Benzene, 1 ring वाला तो benzene, 2 ring naphthalene, 3 ring anthracene, 4 ring tetracene, 5 ring pentacene, 10 ring decacene, 22 decacene. But अभी ये 3 है anthracene के, बराबर. और 1 रिंग ऐसे ऊपर रहेंगे तो उसको बोलते हैं टेट्रासीन नहीं, टेट्राफीन या पेंटाफीन. तो देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन.
ऐसा ही टेट्रासिन, पेंटासिन, सीन एंड एक रिंग भी ऊपर हो तो फिन, नोनाफिन, डिकैफिन। ओके, तो प्रॉब्लम क्या मालूम है? बेसिक रेगुलर थिंग्स वी स्टडी। अभी देखो, आपको नैप्थेलिन, एंथ्रासिन मालूम है। क्वेश्चन किधर स्टार्ट होता है मालूम है? टेट्रासिन से, पेंटासिन से। हम जिधर तक प्रिपरेशन करते हैं ना, उधर क्वेश्चन आते ही नहीं। हम जिधर स्टॉप करते हैं ना, उधर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आई थिंक हाँ, लोग 10 साल का प्लान करते हैं। हम तो अरे नेक्स्ट एग्जाम का प्लान करना चाहिए, कल का प्लान करना चाहिए। हाँ, तो don't prepare for just for the 2 hours or just to qualify the exams. Okay, आप ऐसा नॉलेज ग्रास्प करो, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके कॉन्फिडेंस से, प्रोनाउंसिएशन से सामने वाले इंप्रेस होने चाहिए। देन व्हाई नॉट टेकिंग इन द इंटरव्यू? क्यों नहीं लेंगे? अरे क्वालिटी रहता है ना, क्वालिटी को सब कुछ मिलता है। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज इन द पुणे यूनिवर्सिटी फॉर एमएससी, मैं सेट नेट का प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे को अहमदनगर कॉलेज में 6 महीने के लिए जॉब मिला था, 5,000 का। टू गेट द 5,000 इट इज वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंट्री मिलना, एक स्मॉल विलेज से मराठी मध्ये एकदम बोलणारा, साधा सिंपल, ज्याला कोणी व्हॅल्यू देणार से 5,000 जॉब भेटणं डिफिकल्ट होतं, 5,000 पर मंथ। बट आई एम वेरी हैप्पी। जब मेरे को फर्स्ट टाइम इधर विल्सन मुंबई में ज्वाइन होने के बाद एक सेशन दिया था मैंने क्वांटम केमिस्ट्री 8 आवर्स का, 15,000 मिला था। I was thinking 2 hours respect to this 15,000 is not money, is the value of your hard work outcome. जब हम स्ट्रगल हुए थे लाइफ में, क्या वैल्यू था उसका, अभी देखो। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट ब्लेम टू एनीवन, डोंट ब्लेम टू द सोसाइटी। पहले आप ऐसा बनो, कैसा? सोसाइटी को क्या चाहिए, बाहर क्या चाहिए, वैसा आप खुद को प्रिपेयर करो। आप क्या करते हैं? मेरे आजोबाने बोलवलं मला अनालिटिकल घे, ऑर्गॅनिक घे, म्हणून मी घेतलं। अरे आजोबाचा एक्सपिरियन्स बिफोर 30 इयर्स 40 इयर्सचा आहे, सध्या काय चाललंय? तो मीन्स व्हेन यू टेक द गायडन्स ऑल्सो, प्लीज थिंक अबाउट दॅट। आणि डे बाय डे you have to add the value, sorry, one day by day add the your value in your, क्या बोलते, value added, I think courses है, value you have to add। I think simple example, आपके पास अभी मैं एक बॉटल रखता हूँ, पानी बॉटल, बिस्लरी लेते हैं, क्या करते हैं आप? पानी पीते, बॉटल फेंक देते हैं, बराबर। अभी आप कॉलेज जॉब जाते, आपके अच्छा बॉटल रहते 200 300 का 400 का, क्या करते हैं आप? पानी पीने के बाद फेंक देते हैं का? नहीं। तो टेल मी नाउ, बिस्लरी बॉटल, बॉटल का वैल्यू कुछ नहीं है, पानी का वैल्यू है। और ये जो बॉटल है आपके बैग में, बॉटल का वैल्यू है, पानी का वैल्यू कम है बॉटल से। तो जिसका वैल्यू है वो अपने पास रखते हैं, और वैल्यू नहीं वो फेंक देते हैं। तो प्लीज ट्राई टू वैल्यू एडेड, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाओ। And when you increase your value, people are trying to respect it. Okay, तो see here, जैसा जैसा देखो, ground state, first excited, second excited, third, fourth, you know the drunken person at the ground level, if you drink the 1 bottle water, क्या होगा? कुछ नहीं। But you take the 1 dose of the alcohol, vibration start, energy increase, second dose, third dose, fourth dose, एनर्जी क्या बढ़ती है? ओके, तो because of the energy, okay, that molecules are very excited. Unstable means excited, activated. So please try to, when you want to come to the challenge, come to the activated stage, come to the excited stage. Okay, तो इससे आपको देखो एक सिंपल क्वेश्चन इधर 2-2 मार्क के लिए फटाफट आपको आंसर मिलेंगे। वेव फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम अंडर स्टडी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, आपको नेचर ऑफ द सिस्टम मिलेगा।
The solution of the Schrodinger time independent equation gives solution in a form of a wave function of a system. देखो Schrodinger का time independent and time independent रहता है. When you want the energy, information of energy, that time independent. When you want the information of time, then that is the time dependent. Okay. So since the equation is independent of time, it is also known as the stationary state wave function, means time independent. देखो अभी n is equal to 0 है, n is equal to 1 है, n is equal to 1 means first excited state. How many node is here? Can anybody tell? Node means क्या होता है मालूम है? क्रेस आपको मालूम है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ट्रप आपको मालूम है नेगेटिव एम्पलीट्यूड. वेयर इज द साई वैल्यू 0? नोडल प्लेन, देयर इज अ नोड. तो देखो इधर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साई वैल्यू इधर 0 होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, उस टाइम क्रेस टू ट्रप नोड फॉर्म होता है. तो कितना इधर 0 नोड है, इधर कितना है 1, इधर 2, इधर 1 2 3, 1 2 3 4, बराबर. तो दिस इज कॉल्ड एज द नोड. अभी देखो radial node, angular node is a different things. This is depends on the energy. Okay, one dimensional or a harmonic oscillation type. This is a one dimensional, this is a harmonic oscillation. Okay, now tell me, this is a one dimensional box. His length is box, this is L. Crest है ना ground level पे L. Suppose you have to find out the length of this crest. कितना होगा? इधर L है, तो इधर क्या होगा? L by 1, L by 2, L by 3. मीन्स कितना हुआ? L by 3. मीन्स L by 2, L by 3. Okay? So this is the Schrodinger equation. So this is Hamilton operator. Okay, psi, H operator operating on psi. So that is equation you get. And when particle inside the box, potential energy is 0. When particle cross this boundary, potential energy is infinite. That you have to take care. So here, particle can move freely inside the box. Barabar? Inside the box. Potential of the electron inside the box is 0. Outside the box is infinite. Psi value is 0 at the edges of the box. And energy is directly proportional to the n square, means quantum number, principal quantum. So abhi 3 questions hai idhar. Three type of questions you get it. 2 marks, don't expect 4 marks. अभी देखो ये one dimensional box है, ground state, first excitation, second state. आपको पहले number of nodes मालूम हुआ, here 0 node, 1 node, 2 node, बराबर. Normalization condition से देखो, which is the symmetric wave function, which is anti-symmetric. So please everyone note down this trick. आपको सॉल्व करना है, वो बुक रीड करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं. Symmetric wave function at n is equal to 1 3 5 odd value. When it is in a one dimensional box, n value is odd number 1 3 5 7 odd number. उसको क्या बोलने का? Symmetric wave function. If it is even number value means 2 4 6, उसको क्या बोलने का? Anti-symmetric. Even value anti-symmetric, odd value symmetric. Are you understood? Then energy, suppose energy, this is energy, but आपको just बोलने का suppose x है, En is equal to x, but किसके ऊपर डिपेंड है? बाकी ये सब कांस्टेंट है, n स्क्वायर. suppose ये सब कांस्टेंट x है तो n स्क्वायर है. suppose n is 1 तो क्या होगा? 1x. suppose n is 2 is 4x. 1x 4x is 3 9x. Means difference is every time. Look about that. You have to find out the difference in the energy levels. Then nodes for particle in one dimensional box are calculated using n-1 formula. Please take care. When you calculate the nodes for one dimensional box, formula is n-1. And harmonic oscillation is not n-1. Here, they go. N is 0, 0. N is 1, 1. Because in harmonic oscillation, simple harmonic oscillation, 0 point energy is there. Okay, that's why that is directly proportional to n. Simple harmonic oscillation. But in one dimensional box is n-1. Clear? So this is I told energy difference. कोई भी कर सकता है energy difference. इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं है. आपने कोई जरूरत नहीं है. अभी आपको 4 मार्क का क्वेश्चन किधर है? 4 मार्क का क्वेश्चन आई थिंक सॉरी
1. This is for 2 dimension. I think देखो 1 डायमेंशन के लिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर फॉर्मूला है, n स्क्वायर जस्ट 1 डायमेंशन, पर 2 डायमेंशन होगा तो इधर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ये एडिशनल टर्म होगा। अभी 3 डायमेंशन h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, दिस इज कांस्टेंट। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन n स्क्वायर था, 2 डायमेंशन में क्या इधर x y या y z। अभी 3 डायमेंशन में क्या होगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ऑल 3 विल कम। ओके, तो 2 डायमेंशन बॉक्स में डिजनरेसी 1 1 ग्राउंड लेवल, सेकंड में क्या होगा 2 1 1 2, थर्ड में क्या होगा 2 2, फोर्थ में 3 1 1 3। हाँ, ये सॉल्व कर। तो इन 2 डायमेंशनल आइदर 1 डिजनरेसी या 2 डिजनरेसी, बट इन 3 डायमेंशनल बॉक्स 3 6 9, even number, sorry, in between even number will not there, 3 6 9. What 2 dimensional 1 or 2, 1 2, but 3 dimensional, yeah, you can say cubic box. What is the difference between 3 dimensional and cubic box? 3 dimensional lx ly lz, lx is not equal to ly, is not equal to lz, but in cubic box lx is equal to ly is equal to lz, all 3 dimensions is similar. Okay, so this is your equation, everybody can check it. L square. तो अभी देखो ये जो वैल्यू है ना, अभी ये मत देखो, कभी कभी क्या होता है, ये इज 2/L है, इसका 2/L बराबर, ये क्या हो रहा है 2/L जस्ट 1 डायमेंशन, पर 3 डायमेंशन बोला तो ये इक्वेशन आता है, मींस 2 into 2 into 2 8, and along the LX x axis y axis z axis, तो ये this is will be as it is along the x axis y axis z axis। 1 डायमेंशन होगा तो ओनली साइन एक ही रहेगा, 2 डायमेंशन होगा तो ये 2 आएंगे, 3 डायमेंशन बोला तो 3 एक्सिस। ये वी आर जस्ट एक्सप्लेन। अभी इधर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। नाउ स्फेरिकल हार्मोनिक्स, व्हाट इज मीन बाय स्फेरिकल हार्मोनिक्स? स्फीयर। अभी देखो ये न्यूक्लियस है, नाउ इलेक्ट्रॉन इज हियर, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस हियर। तो अभी देखो up to the 1 dimension 2 dimension 3 dimension Cartesian coordinate was there, x y z। अभी now it is not depends on the coordinates, it is depends on the angle। first देखो particle position is here बराबर, हाँ, is origin angle, distance is radius is r, and this angle separate from z is theta, and projection is here phi। तो इधर अभी क्या होगा, instead of x y z r theta phi, what is r? Radius, theta zenith angle, phi azimuthal angle। तो अभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या आता है देखो सबको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन एक्स वाई जेड का रिलेशन पोलर कोऑर्डिनेट के साथ। तो देखो एक्स, अब ये डायग्राम से डायग्राम दिया जाएगा आपको, रिलेशन करेक्ट देविलास। अभी देखो एक्स एक्सिस है, एक्स को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन सा है, फाई है बराबर, बट फाई इज डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर है, डिपेंड थीटा, एंड थीटा इज डिपेंड्स ऑन, देखो बराबर ना, डिस्टेंस चेंज हुआ तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज हुआ तो प्रोजेक्शन चेंज होगा, मींस इसके फाई इज डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा इज डिपेंड्स ऑन, एवरीबॉडी एग्री? देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस में एक्स एक्सिस में कांटेक्ट में कौन सा है, फाई एंगल है, फाई इज डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा इज डिपेंड्स ऑन आर। हाँ, तो प्लीज कीप इन माइंड, जो डायरेक्टली कांटेक्ट एंगल है उसको कॉस बोलने का, लिख के लो, जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है उसको साइन। अपने पास टाइम नहीं सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, जस्ट विद इन द सेकंड यू हैव टू आंसर इट। हाँ, तो देखो ये एक्स है, अभी पहला आर एज इट इज रहेगा, सब में एक्स वाई जेड आर रहेगा बराबर, उधर कुछ नहीं, एंगल किसमें चेंज होता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल में चेंज होता है। तो अभी देखो एक्स एक्सिस है, एंगल फाई इज डायरेक्ट कांटेक्ट बराबर, तो कॉस फाई होगा, थीटा इज डायरेक्ट कांटेक्ट, एक्स एक्सिस नो, इनडायरेक्टली उसको साइन, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। एवरीबॉडी एग्री? डायरेक्ट कांटेक्ट एंगल होगा तो उसको कॉस बोलने का, इनडायरेक्ट होगा तो साइन। अभी कम टू द वाई एक्सिस बराबर, आर इज देयर। अभी वाई एक्सिस में नाइदर थीटा डायरेक्ट कांटेक्ट और फाई, तो बोथ आर साइन थीटा, बोथ आर
sine. Means sine theta r, sine theta, sine phi. Agree? Now last, z is equal to r cos theta. Where is the phi? देखो z एक्सिस है, डायकोटेक थीटा है, इसलिए cos आया, and theta is depends on r, but theta is not depends on phi, so don't write down the phi. बराबर है? Because theta is depends on r, that's why theta and r is there. But theta is not depends on phi, but phi is depends on theta, theta is depends on r. तो z एक्सिस में phi will not come. Okay? चलो, अभी ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने का फटाफट. Now radial node and angular nodes. Okay, तो देखो ये radial node है, radial node formula you can write down n minus l minus 1, n small n principal quantity, l azimuthal quantum number and minus 1. Suppose 1s है, हाँ, what is the radial node? How many radial node for 1s? n value क्या है? 1 है. Azimuthal quantum number of s 0. 1 minus 0 minus 1. 1 minus 1 0. तो 1s orbital radial node is 0. 2s क्या होगा? 2 minus 0 minus 1. 2 क्या है? n principal quantum number. Azimuthal quantum number of s 0. तो 2 minus 0 minus 1. देखो 1 node radial node. किसको radial node क्यों बोल रहे हैं आप? Because this node is depends on the radius from the origin. Okay, and third 3s क्या होगा? 3 minus 0 minus 1, तो 2 1 2 nodes. Okay, I think इधर एग्जांपल है, अब देखो. हाँ, चलो फटाफट बोलो. 3s है, how many node? Where is the psi value? 0 1 2. 3p how many node? 1. 3d 0. 2s 1. 2p 0. 1s 0. ये अभी डायग्राम से मालूम है, but if you ask 3d why 0, tell me. 3d y 0, 3 n is 3, l value for d is 2, is 3 minus 2 minus 1 0. Why 3p is 1? 3 minus 1 minus 1, because l value for p is 1. Why 2p 0? So 2 minus 1 minus 1 0. Okay, so this way you find out the radial node, and please take care, radial node is understood, but abhi smart examiner बहुत smart है. So that they will not ask only radial node, they are asking the radial and angular node for, it depends on L value, azimuthal quantum number. So please keep in mind, note down here in the tricks, angular node is depends on L azimuthal. तो अभी बोलो, फटाफट आंसर दो. 3s 0, 3p 1 radial one angular node, 3d 0 node, 2s 1 radial, how many angular? 0. 2p radial n minus l minus 1. Angular, it is depends on the azimuthal quantum number. चलो, now पार्टिकल एक्सेप्ट नॉन एक्सेप्टेबल पहिलं तर बघा इथे फंक्शन आहे psi of r theta phi is expressed or separated. R of r means क्या बोलने का? Radial component, because it depends on radius, and this is YLMM means azimuthal and magnetic quantum. Phi means angular component, it depends on angle. से कुछ फायदे का नहीं, अपना चलो. Suppose now polar plots of atomic orbitals such as 1s, 2pz and 3dz orbitals by using angular part of hydrogen atomic function. Now अभी पहला 1s orbital देखेंगे. Why you are saying 1s orbital is spherical? Everyone saying? सगळे agree आहेत ना? 1s. बैटरी चार्ज. आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आपके बोर्ड टीचर ने बहुत बार बोला है. देखो 1s orbital, L is 0, azimuthal quantum number, magnetic quantum number 0, f of theta is 1. So you take the any angle 0, 15, 30 up to the 345, 360. So f of theta is 1. Now look about this. Your is nucleus here, first pair, second pair, third, fourth.
and take the scale. पहला 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. तो 0 के लिए 1 है, 15 के लिए 1 है, 30, 40 सब 1, 1, 1. Scale down करो and connect it. How is looking now? So this is spherical. This is spherical. इसलिए s orbital is spherical. अभी s orbital simple था वो सब मालूम हुआ. चलो p के लिए आ जाओ. हाँ. For 2pz orbital. Why is 2pz? Because magnetic quantum number of z orbital is 2pz is 0. तो देखो azimuthal 1, magnetic quantum number 0, f of theta is equal to cos theta. f of theta is equal to cos theta. बराबर. हाँ. Now degrees. चला. Cos theta है ना. चला. Cos 0. इसलिए you can make the software. I think sir you can if you are your autonomous college, I think you can put this experiment is we can say dry experiment based on the computer. आपको value देंगे student means they are studying the quantum chemistry or any physical chemistry theoretical in the subject. हाँ, तो that should implement in the laboratory. तो quantum के ऊपर ये सब experiment है. तो cos 0, 1, cos 15, use the calculator and find out. बराबर. अभी चलो cos 0. हाँ, इधर अभी आपको क्या चाहिए? हाँ, स्पेयर अभी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, मैक्सिमम 1 है. बराबर. मैक्सिमम वैल्यू 1 है. तो cos 0 is 1. बराबर इधर. Then cos 15, 0.97. cos 30, 0.87. cos 45, cos चला. तो cos 90 के लिए अलग 0. अलग. Then minus 0.26 किसके लिए 105. 120 के लिए minus 50. Then come to the 195 कितना है minus 0.97. 180 के लिए minus 1 है. बराबर. तो ऐसा करके करके आप इधर आ जाओ वापस और अभी पॉजिटिव चालू हो जाएगा. 270. हाँ, ये देखो इधर 250, 270 इधर. हाँ, अच्छा. तो 270, 285 ऐसा करके करके 360. Now disconnected. Okay, तो आई थिंक एवरीबडी नो आपके टीचर ने आपको जो पढ़ाया है या आपने भी पढ़ाया किसको, तो कैसा आप डंबल शेप ड्रॉ करते थे. आई थिंक मेरे को इधर इजी नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर. देखो सॉरी शेप नहीं बराबर आएगा. ऐसा कुछ तो ड्रॉ करते थे. बराबर. हाँ बराबर. इनऑर्गेनिक टीचर ने बहुत बार आपको ड्रॉ करके दिखाया रहेगा. तो एक्चुअली हम ये क्या करते थे, लास्ट में ऐसा बनाते थे. ऐसा में सॉरी लास्ट में उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता था. एट द एंड जैसा बलून होता था ना वैसा. अभी एक्चुअली हियर देखो दिस सेंटर है ना, ये सेंटर इधर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है. एट दिस एंड एम्पलीट्यूड 0 है एंड हियर आल्सो एम्पलीट्यूड 0 है. कभी आपने ऐसा ड्रॉ किया है क्या? सिमिलर टू दिस साइड. अब इसका नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है, इसका पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है. जो भी वैल्यू इधर आएगा नेगेटिव आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव आएगा. तो दिस इज थ्रू द एक्सपेरिमेंट यू गॉट दिस shape of the. That's why I'm calling in. I'm not teaching quantum chemistry. I'm teaching the quantum chemistry how to apply, means application of quantum chemistry. Okay. So now just connect this and ये dumbbell shape मिला आपको. All are agree? Okay. चलो नेक्स्ट स्लाइड. कौन सा मॉलिक्यूल आप शेप लेंगे? 3D स्क्वायर. ओके चलो 3D स्क्वायर. azimuthal quantum number 2, d वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, f of थीटा इज 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है पर अभी आप इधर टाइम नहीं है इसलिए डिराइव नहीं करें. 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. बराबर. आप पहले cos थीटा निकालो, cos स्क्वायर थीटा निकालो, 3 cos थीटा निकालो, देन फाइंड आउट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. हाँ, जो भी वैल्यू अभी इधर मैक्सिमम 2 वैल्यू आया तो आप क्या करो, स्केल ऐसा दो 0.4, 0.8, 1.2, 1.62 और चलो ड्रॉ. अभी 360 0 है तो 2 वैल्यू है. हाँ सर वी हैव 10 मिनट मोर. Yes, sir. Can we take 10 minutes more, sir? Yes, sir. Yes, sir. घेऊ ना.
Yes, sir. Yes, sir. ऐकतात का कोणी? नाही तर कसं व्हायचं, आम्ही या साईडला शिकवायचो आहे. कारण हा येस ना. आहेत सर, आहेत. हा नाही, कारण का शेवटचा आता 10 मिनिटात ना ऍप्लिकेशन ओरिएंटेडच आहे जास्त. ओके, ओके. Yes. Now here f of theta is f of 0 is 2. बराबर. तो ये this is the value f of 0 is 2. Now you come to the 1.80, this. हाँ, अभी माइनस में है तो चेक करो, ये माइनस है तो विल कम दिस वे, इज कनेक्ट द माइनस थिंग्स. बघा सगळे मायनस व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे. आता हे मायनस नंतर खाली यायचं नाही डायरेक्टली, कारण हे दुसरं बी मायनस नाही. 1 2 3 4 5 5 मायनस व्हॅल्यू नंतर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आहे. ओके, तर दिस विल कम 5 अगेन 5 पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज अँड देन लास्ट this is negative, this 5 value. Okay, then you come down here and then last 5 positive, so you come to this way. इसको बोलते हैं हम डबल डम्बल शेप, डी ऑर्बिटल. ओके, तो प्लीज once again just try to understand this. देखो स्टार्ट इधर से हुआ है, फर्स्ट 5 की 4 है, 4 रीडिंग पॉजिटिव है, बराबर. देन निगेटिव है तो निगेटिव ऐसा ही ऊपर जाएंगे, ऐसा आएंगे, बराबर. देन पॉजिटिव 4, then this negative, and last this is the positive. So this way when you connect it, it is the shape of the d orbital through the particle on a sphere. Okay, now rigid rotor, I think जास्त हे करायचं ना, कारण रोटेशनल एनर्जी सगळ्यांनी रिजिड रोटर रोटेशनल एनर्जी आय थिंक स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये फाइंड आउट केलंय. रिजिड रोटरचा मीनिंग काय होत आहे? रिजिड मीन्स you have to like consider like the diatomic molecule CO, HCl, HF. Distance between the two atoms when you rotate is fixed, इसलिए rigid बोलते हैं. Distance between the two atoms is fixed when rotate. Rotor means rotation with respect to time. Okay, so according to that you can find out the rotation energy. Suppose when you rotate the CO molecule, when you rotate the NO molecule, yeah, HCl, HBr, HI, so all molecule will not require the same energy. So it is depends on the mass of that atoms. Okay, that way you can find out the rotation energy. Last concept is HMO theory. Okay, I think most of the students from the teachers from the organic chemistry, they know this. Okay, so I think आप एरोमेटिक से टॉपिक भी इस पे से क्लियर किया रहेगा, पर मेरा मकसद अलग है क्वांटम वे से. ये तो आपको मालूम है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, pseudo aromatic. I think fullerene C60 is the example of pseudo aromatic. Then homo aromatic, hetero aromatic. Okay, तो all the types of non aromatic finally. तो देखो ये molecule है, तो when you understood that either is radical, carbocation, carbanion or neutral. Okay, so when you are studying the reaction mechanism, we should know the energy. Okay, I think इसमें से कोई रहेगा वो लीडर रहेगा, लीडर. ओके, वो गली का, वो मोहल्ले का ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गिरगांव का डॉन ऐसा बोलते हैं ना, बीड़ का डॉन, वो समथिंग ऐसे. तो सपोज अभी मॉलिक्यूल है, टू सर्वाइव द मॉलिक्यूल व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड? दैट इज पाई बॉन्डिंग एनर्जी. ओके, वो मॉलिक्यूल को जितना एनर्जी चाहिए उतना उसके पास है. बट इफ हैव द मोर एनर्जी देन दैट, उसको क्या बोलते हैं हम? डीलोकलाइज. तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है? दूसरे के ऊपर अटैक करता है. देखो ना, आप एकदम सिंपल पर्सन हो गए, कुछ किसी को कुछ बोलते नहीं, किसी के ऊपर अटैक करते नहीं, बट आपके पास एनर्जी ज्यादा हुआ, हाँ, तो आप क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं. नॉलेज ज्यादा बढ़ा, दूसरों को खींचते, बराबर. तो सिमिलरली हियर टोटल एनर्जी
pi bond energy and delocalize. If energy is more than that, delocalize the system. Okay, I think question पूछता हूँ इसके ऊपर. सबको अभी I think you are studying in the first year, second year, MS part 1, part 2. I think anthracene molecule में बीच में छोड़ गया. Anthracene. तो anthracene molecule के ऊपर आप ऑक्सीडेशन करते हैं या डिल सडर रिएक्शन करते हैं, तो कौन से पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, कोई बोल सकता है एक, या मैं चैट में बोल सकता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर. तो मेजर प्रोडक्ट इज 9 10 पोजीशन. एवरीबडी एग्री? मेजर प्रोडक्ट 9 10 पोजीशन. आप ऑक्सीडेशन करो या डिल सडर रिएक्शन करो. Okay, 9 10 position, major product. 1 4 and is other same as to this side is minor product. Why this is happening? Okay, you don't tell me this resonance stabilization, that I know. 1 4 also some resonance stabilization, 9 10 also resonance stabilization. I want the significant value, and through that, through the quantum delocalization, you get that value. So देखो आप, if you do the reaction on 1 4 position, तो साइड में कौन सा रिंग है? नैप्थेलिन है. 1 4 पे रिएक्शन होता है ना, साइड में नैप्थेलिन है. एंड व्हाट इज द स्टेबिलाइज एनर्जी ऑफ नैप्थेलिन? 54 किलो कैलोरी. स्टेबिलाइज एनर्जी ऑफ नैप्थेलिन इज 54 किलो कैलोरी. इफ यू डू द रिएक्शन ऑन 9 10 पोजीशन, नाउ टेल मी, राइट हैंड साइड 1 बेंजीन रिंग, लेफ्ट हैंड साइड 1 बेंजीन रिंग. अभी विदाउट नोइंग द केमिस्ट्री नॉलेज, कोई भी बोलेगा अरे सेंट्रल है, मींस बैलेंस प्रोडक्ट है, बैलेंस. वो जाने तो केमिकली या थर्मोडायनामिकल स्टेबल और क्या, त्याच्या नॉलेजची गरजच नाही. बघूनच आपल्याला सांगितलं हे स्टेबल आहे. पण बघा सिग्निफिकन्स आता. राइट हैंड साइड बेंजीन, लेफ्ट हैंड साइड बेंजीन. हाउ मेनी बेंजीन? 2 बेंजीन. 1 बेंजीन स्टेबिलाइज एनर्जी 36 किलो कैलोरी. 1 बेंजीन स्टेबिलाइज एनर्जी 36 किलो कैलोरी. तो कितना बेंजीन रिंग है? 2 है. तो कितना हुआ? 36 into 2 72. देखो 1 4 position naphthalene was there, 54 kilocalorie, and 9 10 position 2 benzene 72. And tell me now, you can easily distinguish 72 kilocalories more than the 54, and that's why on 9 10 position is the major product. Please. Slide is visible. Sorry, one. Yes, sir. नहीं, आई थिंक एक मिनट वापस शेयर करता हूँ वही. हाँ, विजिबल आहे ना सर? हो सर. हाँ, तर आता बघा, तो क्लियर द कंसेप्ट. दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी दिस HMO थ्योरी. 9 10 पोजीशन सबको समझ में आया? 1 4 पोजीशन 5 माइनर, 9 10 पोजीशन मेजर. मींस आपको जो आंसर मालूम है ना, उसका सब एक्सप्लेनेशन, रीजन मालूम होना चाहिए. आई थिंक जो अभी PhD करते हैं, ओके, आप जो भी करो, प्रूव करो, जो भी कंपाउंड बना रहे, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उतना हाई लेवल का पेपर पब्लिश होता है. ओके, जब आपके 2 रहेंगे तो 1 इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा. 6 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे तो इम्पैक्ट फैक्टर 3 भी पब्लिश हो सकता है पेपर. 15 रहेगा तो 10 भी जा सकता है. में जितना आप एविडेंस देंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे, उतना आपका हाई लेवल का पेपर पब्लिश हो सकता है. ओके, तो सिमिलर हियर, जितना आप रीजंस देंगे, उतने रीजन से आपका आंसर सेटिस्फाई हो सकता है. तो दैट्स व्हाई रीजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आई थिंक एवरीबॉडी नो होमो लुमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट इन ऑक्युपाइड. तो अभी मैं आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन ये देता हूं. When you study the any organic molecule, जैसा पॉलीमर में बोलते हैं ना मोनोमर, वैसे आप उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखें तो उसमें इथिलीन मॉलिक्यूल रहता है. तो नंबर ऑफ इथिलीन से मॉलिक्यूल बनते हैं, बराबर. तो इथिलीन स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. हाँ, आई थिंक आप एक प्रैक्टिस करते 4 मार्क का. ये जो सेक्युलर डिटर्मिनेंट, तो जस्ट हाँ, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है. दिखता है सबको 1,3 ब्यूटाडाइन. तो 1,3 ब्यूटाडाइन में डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 कार्बन है तो 4s2 4.
4:4 बराबर। हाँ, यू नो द आई थिंक आप 12 में या 12 में आपने डिटर्मिनेंट याद रखा है या मैट्रिक्स को भी याद रहेगा, तो कैसा लिखा था आपने वैसा, ए handsome girl, sorry girl is not handsome but you can say guy also, no problem. A handsome girl or guys having beautiful face means HBF बराबर। और क्या था, ए हैंडसम गाय हैविंग ब्यूटीफुल फेस, अभी रॉन्ग होता है ना, कुछ भी बोलो, ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ए हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस, गॉन फॉर जी, जी इज द गॉन, एफ एंड सी क्या होगा, कॉलेज या कैंटीन या सिनेमा, नो प्रॉब्लम। तो दिस वे आई थिंक ट्रिक्स यू हैव टू कीप इन माइंड, हाउ टू रिमेंबर द डिटरमिनेंट, ए हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस, gone for cinema or college. Okay, so this is the tricks was given in the 12th. Okay, and we carry forward that and we are using and we are based on that we are solving the problem. Okay, तो अभी हो जाने, तो अभी आपको 2 मार्क्स चाहिए ना 1,3-butadiene का सेकुलर डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने के लिए। तो सब ट्रिक याद रखो, 2 मार्क्स। देन यू फाइंड आउट एनी मॉलिक्यूलर और एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट कार्बन देखो C1 C2 C3, तो फर्स्ट कार्बन कंसिडर इज X बराबर, सॉरी X, if is connected 1, if is connected 1, if is not connected, C1 is not connected, C3 0, fourth not connected 0। चलो हो गया फर्स्ट, अभी सेकंड कार्बन C2, C2, तो C2 में इधर आएगा, C2 इज X बराबर। नाउ C2 इज कनेक्टेड फर्स्ट 1, C2 is connected C3 1 and C2 is not connected C4 0। Now third, सॉरी ये X आप समझ लो, इधर ड्रॉ करने को डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो C3 is X is connected C2 1, connected C4 1 and 1 0 and last carbon, okay, C4 X, I think first time बराबर आए हैं। हाँ, C4 is connected C3, yes 1, it is connected to no 0, is connected to C1 no 0। तो this way secular determinant you can draw, it is very simple। तो this way you can draw the any molecule, जो कार्बन रहेगा उसको X समझने का, एंड कनेक्टेड रहेगा तो 1, नॉट कनेक्टेड रहेगा तो 0। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेक्युलर डिटरमिनेंट का हुआ, 2 मार्क आपके फिक्स है। ओके, बेंजीन देखने का है, बेंजीन का भी देख सकते हैं आप फटाफट। हाँ, इधर है बेंजीन। हाँ देखो, बेंजीन का फर्स्ट कार्बन है, उसका X है देखो, कनेक्टेड टू सेकंड यस एंड बाकी सब 0 एंड कनेक्टेड टू द लास्ट 6th है, तो 2 3 4 एक मिस्टेक हुआ। हाँ 6 को जो लास्ट है उसको 1 बोलने का। C2 देखो X कनेक्टेड टू C1 C3 बाकी सब 0। थर्ड देखो C3 कनेक्टेड टू C2 एंड C4 1 है, बाकी सब 0। C5 देखो कनेक्टेड टू C3 एंड C4, सॉरी C4 देखो कनेक्टेड C3 एंड C5 1, बाकी सब 0। C5 देखो कनेक्टेड C4 एंड C5 connected C4 and C6 and last देखो C6 connected to C1 and C5, बाकी सब 0। तो this is the tricks for any molecule बराबर। हाँ, अभी आपको 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। हाँ, ये सेक्युलर डिटरमिनेंट है, ये इथिलीन का सेक्युलर डिटरमिनेंट। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अभी डिटरमिनेंट कैसे बनाने का सीखा, ओके, यू अंडरस्टूड दैट। नाउ यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस, तो ये ऐसा, ओके, x² -1, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 1। तो अभी x मींस क्या है, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा है। तो आपने को ये सॉल्व करके वो जाने दो ब्रैकेट। हाँ,
x इज प्लस और माइनस 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इथिलीन में दो बॉन्ड एनर्जी है, एक बॉन्डिंग है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग है। देखो इधर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अभी एक फॉर्मूला याद करो, टोटल एनर्जी जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इथिलीन में दो है, दो इलेक्ट्रॉन किसमें है, अल्फा प्लस बीटा, मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये क्या हुआ, टोटल एनर्जी। पाई बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, जितना भी अल्फा होता है मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। पाई बॉन्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस ओनली इन द बीटा फॉर्म, तो 2 बीटा। एंड डीलोकलाइजेशन का फॉर्मूला याद रखो, टोटल एनर्जी माइनस नंबर ऑफ इथिलीन यूनिट। अभी तो इथिलीन यूनिट सेम है तो 0 होगा डीलोकलाइजेशन, बट आपको 1,3 ब्यूटाडाइन में दिखाता हूं, ये क्लियर करो क्या होता है। हाँ देखो 1,3 ब्यूटाडाइन का, हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1,3 ब्यूटाडाइन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इन द E1 2 इन द E2। तो E1 में क्या है, अल्फा प्लस 1.6 दी एनर्जी है, 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो दैट इज टोटल एनर्जी, बराबर। तो क्या है टोटल एनर्जी, 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा। तो पाई बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, 4 अल्फा कैंसिल होगा, अल्फा में आएगा ही नहीं, बीटा में आता है, तो पाई बॉन्ड एनर्जी इज 4.472 बीटा। अभी बोलो डीलोकलाइजेशन क्या आएगा, तो टोटल एनर्जी क्या है, 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा माइनस, आपको क्या बोला था, वन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इथिलीन। अभी इथिल ब्यूटाडाइन में कितने इथिल यूनिट है, 2 है, तो एक यूनिट का एनर्जी कितना था, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 यूनिट है तो डबल कर, तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो ये करो सब्ट्रैक्ट, तो 4 अल्फा कैंसल, 4.472 बीटा माइनस 4 बीटा, द 0.472 बीटा is delocalization, and that's why so on the 1,3 butadiene have the nucleophilic electrophilic reactions at room temperature, spontaneous reaction। तो साइक्लोब्यूटाडाइन देखो, इधर ही एग्जांपल क्लियर करता हूं, देन विल स्टॉप। साइक्लोब्यूटाडाइन है का, हाँ यस, तो इसका डिलोकलाइजेशन एनर्जी देखो आप, उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, पाई बॉन्ड टोटल एनर्जी देखो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, पाई बॉन्ड एनर्जी 4 बीटा, एंड डिलोकलाइजेशन एनर्जी देखो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, 2 यूनिट ऑफ इथिलीन 0। दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड दैट हियर इज प्रूव्ड cyclobutadiene at room temperature reaction is non-spontaneous, but you change the temperature, high temperature reaction can proceed also, but हम जब स्टडी करते हैं रूम टेम्परेचर का पहले देखते हैं। if reaction is non-spontaneous at room temperature then we increase the temperature। जब आप कंडीशन चेंज कब करते हैं, if reaction is non-spontaneous at room temperature, तो reaction spontaneous at high temperature, बट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर। देखो आप ए प्लस बी कुछ कंपाउंड मिक्स करते हैं, सोल्यूशन क्लियर हुआ, मीन स्पॉन्टेनियस, बट आप उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टर्बिडिटी फॉर्म होता है। तो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस, बट रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो दिस आर द एग्जांपल यू कैन सॉल्व। ओके, दिस इज गिवन diagrammatically ethylene butadiene allylic benzene, and this is a quick trick to determine energy level। उसको ही क्या बोलते हैं, the Prost Muslin diagram। तो cyclopropane, cyclobutadiene, cyclobutadiene, this benzene, जाओ आप 2 pi electron 6 pi 6 pi 6 pi and 10 pi electrons। okay, तो this way conclusion की क्या जरूरत नहीं है, इतना हमने बहुत कुछ सीखा है। okay, तो I think miss Schrödinger equation, eigenvalue equation, how to implement for 1D 2D 3D, application of Schrödinger equation, separation of variables, miss तो आपको ही मिला ना, radial and angular determinant spherical, rotors and application of molecule, Huckel molecular operator theory। okay, so thank you from my side। this is just because it's online and 2 hours, I think it is very difficult, because this I can explain 4 hours when it's a, because example with example and explanation interactive, that will be more effective, but within 2 hours from my side is given। okay, this is just idea tricks, I was giving the direction, तो आपको ही अभी आगे जाने का है। okay, so if any questions we can try to give the answers। Anybody have any sir, any question? questions?
I think physical chemistry have the lot of tricks in thermodynamics, kinetics, okay? And देखो एक मैं आपको बोलता हूँ, जब भी काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, you know the unit for first order kinetics, first order, second order, zero order, but they will not ask first, second order. They will ask 100 order. Experiment is not possible, but you can think it and use your knowledge. So if this question is come, n is 100 order. So what is the unit for n is 100 order? तो मैं ऐसा ट्रिक्स दे सकता हूँ, LMT. L means ABCD आता है ना सबको, LMT अल्फाबेटिक ऑर्डर. L is liter, M is mole, T is time. तो रेस्ट ऑर्डर n minus 1, liter raised to n minus 1, mole raised to 1 minus n, and time raised to minus 1, decreasing order. Now suppose n is 1, तो L liter raised to n minus 1, 1 minus 1 0, लीटर का यूनिट आता ही नहीं. मोल 1 minus 1 0, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या है? पर टाइम ओनली. ऐसे सेकंड ऑर्डर निकालो, and if 100 order you required, liter raised to 100 minus 1, 99. Liter you can say decimeter cube also. Mole 1 minus n, 1 minus 100 minus 99 means liter raised to 99, mole raised to minus 99 per time. You can find out any order, unit for any order. So that's why I'm telling you, if you have the tricks, electrochemistry, left hand, right hand side, anode, cathode, देखो ना, left hand, right hand side, LR, anode, cathode, AC, oxidation, reduction, anion, cation, so means everything is alphabetical. Means I said tricks find out karo and then you try to solve it. Okay? I think तो एक दो स्टूडेंट से इंटरेक्शन होना चाहिए, आपने बोलना चाहिए, कुछ तो पूछना चाहिए. जब आप बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको एक बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. Giving the answer, I think, is not that much required the skill, but asking the question, क्या क्वेश्चन पूछो, कौन क्या बोलता है, हम दूसरों के लिए जिंदा है, बराबर, दूसरों के लिए जॉब कर रहे हैं, दूसरों के लिए स्टडी कर रहे हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को जॉब लेना ये करने के लिए. अरे खुद के लिए कुछ करो. यू ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, दूसरा क्या बोलता है, आप बोलो आई वांट टू बिकम द IAS ऑफिसर. 99% पीपल, अरे कल ही न्यूज आया, एक शेतकरी मजुराचा ज्याची आई अंगणवाडीमध्ये शिकवत होती, ज्यावेळेस तिला म्हटले, ती सांगत होती सगळ्यांना की माझा मुलगा UPSC आणि MPSC करतोय, कलेक्टर होणार आहे, कलेक्टर साठी प्रिपरेशन करतोय, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तर सगळे त्यांच्या गावातले सगळे A to Z हसत होते त्यांच्यावरती. ती काय बोलती, अंगणवाडीमध्ये काम करती, मुलगा हजबंड शेतकरी कामाला जातो, शेती करतो, आणि मुलाला सांगते की कलेक्टर बनवायचं. कालच्या रिझल्ट मधून तो डेप्युटी कलेक्टर झालाय. तो प्लीज जे तुम्ही करणार आहे दुसऱ्यांसाठी दुसऱ्यामुळे करू नका, स्वतःला पाहिजे. यू रिक्वायर्ड द जॉब, यू रिक्वायर्ड द पोटेन्शियल, यू रिक्वायर्ड हॅपीनेस, सॅटिस्फॅक्शन, सगळं तुम्हालाच भेटणार आहे, दुसऱ्या कोणाला नाही भेटणार. दॅट्स वाय जे पण तुम्हाला करायचं आहे त्या टाइमामध्ये करा. यू शुड सक्सेस ऑन टाइम. सपोज यू सक्सेस ऍट द एज ऑफ 59, 58, 60, काय फायदा आहे. जर तुम्हाला नोबेल प्राइज भेटलं आणि तेच ऐकून दुसऱ्या दिवशी गायब झाले प्रमोशन, काय फायदा आहे. सक्सेस झाल्यानंतर तुमचं लाईफ टाइम मोर पाहिजे टू एन्जॉय दॅट सक्सेस. आता आपलं लाईफ टाइम हार्डवर्क करण्यामध्ये चाललेलं आहे. So please be success at the proper age. I am telling you, be frankly, I joined at the age of 22 in this Wilson College for permanent post after the MSc, and that's why all the promotion now. At the age of 42, I become the professor according to promotion. It is difficult in this city, metropolitan city. कोई कुणाला विचारत नाही मराठी माणसाला. But we are proved that केमिस्ट्री मध्ये जर आपल्यापासून पोटेन्शियल असेल ना, सगळ्यांना ऐकावं लागतंय. बट यू ट्राय टू ऍक्सेप्ट द चॅलेंज. कुठल्या फील्ड मध्ये जा, चॅलेंज ऍक्सेप्ट करा. जर चॅलेंज ऍक्सेप्ट केलं तर रिस्क आहे, पण सक्सेस होण्याचे चान्सेस पण जास्त आहेत. चला ना, क्वेश्चन नसेल तर आपण आय थिंक we will conclude here. सर काय एखाद्याला आपण फीडबॅक घेऊया सर, कारण की कसं आपण एवढं त्यांच्यासाठी करतो, मुलांसाठी वर्कशॉप करता, बरोबर आहे. आपण आता Yes, sir. युट्यूब वरती मुलांना हे करणार आहे,
तर आय थिंक त्यांच्याकडून सुद्धा कसं असतं माहिती आहे, आउटकम जर आपण आपल्या लेवलला शिकवलं तर फायदा नाही. मुलांना काय पाहिजे तर आपण ते देऊ शकलो तर दॅट इज आवर सक्सेस वर्कशॉप और आउट दिस सेशन. तो स्टुडंटला आय थिंक एक दोघांनी जर अनम्यूट करता आलं असेल त्यांना, दे कॅन टेल द सम फीडबॅक. फीडबॅक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला जे पाहिजे ते भेटतं की वेगळंच काय भेटायला लागलंय? And madam, नाही, स्टुडंट नाही, टीचर ऑल्सो मीन्स दोज आर जस्ट प्रिपेरिंग फॉर द आर. and madam विचारा. Feedback about lecture. ओके, बोलू शकता. मीन्स नो प्रॉब्लेम. I am happy to accept all these things and we can try to improve in futures. This every day we are trying to improve it, or this this is our outcome is the students. Yeah, in the session if is understood, they are happy, that is our positive energy. Okay, sir. Nobody is responding. Okay. We'll conclude here. Sir, thank you, sir. Sir has delivered such a nice and wonderful lecture on quantum chemistry. Thank you, sir, for nice lecture. Now I invite Ms. Shamal Kharat, madam, for the vote of thanks. Very good evening to everyone. On behalf of organizing team, I am Shamal Kharat. I feel honored to propose the vote of thanks for today's insightful session under the series Crack, Net, Set, Gate with Confidence in Chemical Science Expert Guidance Series. I would like to express my sincere gratitude to our respected resource person, Professor Dr. H.A. Parbhat sir, for delivering such an informative and inspiring lecture on quantum chemistry. We are truly grateful for your valuable time, guidance, and knowledge. I would also like to thank our respected principal, Professor Dr. S.S. Undre sir, and all the faculty members for providing this valuable opportunity and career guiding session for students. Once again, thank you everyone for being part of this wonderful session. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for such a wonderful lecture. Thank you, sir, and thank you for inviting. Okay, I think in future we'll come to the physical also. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so thank you, sir. Okay, thank you.